Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Okay, very good morning. The person who has logged in with @, please rename yourself. In the meeting, one person had logged in with @. See if you can rename your device. I'll request you to write down as first name and last name. Yes, good morning, everyone. We have 87 participants. Okay, we will wait for 2 minutes for others to join. Okay, then before we start our session, okay, we will have, I will run a video from the Executive Director of CDAC, Colonel Nath sir. Okay, that video will be of 10 minutes and then after that we will start your session. Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Am I audible? Yes, ma'am. Oh, Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay. Uh, for some time, I would like to request you all to switch on the videos, okay, so that we can take the snapshots of your images, and this we have to send to CDAC on the first day, okay? Not now, not now, okay? I'll inform you, okay? After that, please switch on your videos, okay? So good morning to everyone. This is for remaining those who Good joined. morning, ma'am. Yeah. Good morning, ma'am. Yes. Okay. Happy Women's Day to everyone. Happy Women's Day, ma'am. Thank you. Happy Women's Day, Happy ma'am. Women's Day, ma'am. Happy Women's Day, ma'am. Thank you. Thank you. Okay. I'm sharing the screen. Okay. We will have the address by Colonel A.K. Nath sir. Okay. I'm just playing this. Do let me know whether it is audible to you all. My senior colleagues from CDAC,
students, family members, and all the faculty, and all the people who are. Is it audible? मैम थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा सा. Audible, ma'am. Senior colleagues from CDAC. Is it audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Students, family members, and all the faculty, and all the people who are responsible for organizing this wonderful induction day function today, as well as the people who are behind the entire ACTS program. A very warm welcome to the 56th induction program of the PG Diploma courses of the Advanced Computing Training School, Pune. First of all, I would like to wish you a very happy Women's Day on this occasion, and especially feel proud to welcome all the women in this course. I would like to start my talk with the words from the great poet and philosopher Sri Rabindranath Tagore, who said that the highest education is that which does not merely give us information, but makes our life in harmony with all existence. As you may know, that CDAC is conducting these PG diploma courses, certificate courses of NSQF level 7 and 8, which is a very renowned rating organization in the country. Every year we have been conducting the postgraduate diploma courses in variety of high-end areas of ICT and electronics. This March 2022 batch, CDAC is launching the PG diploma course in a full-fledged mode, but in a hybrid mode. So therefore, after the pandemic, this is the first time we are now going ahead and launching all these 12 courses. Earlier, we had curtailed our courses to 4 or 5 or maximum 6, and in a purely online mode. However, this time we are going ahead for courses like VLSI, Embedded Systems Design, HPC, IoT, Cybersecurity, which are the hardware-related courses and which require some lab work, which is required essentially. So therefore, the 40 to 50% delivery in these courses will be in physical classroom mode. And other courses like Diploma in Advanced Computing, Mobile, Big Data Analytics, Artificial Intelligence, etc., they can be done in a fully online mode. All these PG Diploma courses which are starting in March now will be of a 900-hour duration, which will be delivered online within 30 weeks, which is 6 weeks more than the physical mode of interaction we had. And we have kept this deliberately to provide additional focus to course coverage over online, because we found that in the online mode, due to the decreasing attention spans and other factors which are very peculiar to the online mode of delivery, it requires more time for assimilation and dissemination of knowledge. So these courses which we are going to have this time are 12 courses. The PG DAC, which is our flagship course, the Diploma in Advanced Computing, and the most popular one also, Diploma in Big Data Analytics, Diploma in Embedded System Design, Geoinformatics, Artificial Intelligence. A new course which has started is Robotics and Allied Technologies, Diploma in Internet of Things, Mobile Computing, IT Infrastructure Systems and Security, VLSI Design, Advanced Secure Software Development, and HPC System Administration. Now these courses will be commencing all over India on 8th of March 2022, and we are expecting to complete them by 31st September 2022. The online PG Diploma courses will have the delivery of lectures and practicals using the online learning tools, techniques, and pedagogies, which are slightly different from the purely physical modes of interaction. The hybrid mode PG Diploma courses will require
the students to visit the CDAC labs for practical and project work purpose, guided through mentorship by internal and external guides. Students will be subject to continuous lab and internal assessments during the course to ensure understanding and knowledge assimilation. Centralized course end examination, which is essential ingredient of all courses, all across the centers will be conducted in the physical mode towards the end of the course. And the students undergoing the PG diploma in online mode will be provided options to attend this exam at centers near to their houses or homes. Online campus placement program will be organized as usual for the students who successfully complete the CDAC PG diploma course. Just to give you a summary of our All India admission process, the registration for this online PG diploma courses this time was, we had an unprecedented 20,278 students who registered. We received 16,226 forms, and total candidates allocated the online 660. And in the first CCAT, there were 5412, and CCAT 2, there were 5110. And seats offered were 5,400. The total number of candidates allocated and joining the CDAC training centers across India are 4473, which is quite a large number, considering that the course is still being disseminated in the online. And this is because of the faith and trust of students towards the very transparent and rigorous training procedure and the great help and assistance they get for the placements, because we conduct a national common campus placements program all across the country and provide phenomenal assistance to the students for their placements. And not only that, we make the students undergo certain, built in the curriculum, there are certain topics related with soft skill development, communication skills, and all those things, which help the students to get prepared for facing interviews and communicate properly in short, because the time they get for the interview is very short. So they generally sometimes fall short of conveying what they know, conveying what they want to convey in a short form. So they are trained in all these techniques, and therefore it makes them even a better trained resource as far as the recruiters from the different companies are concerned. And in the May 2021 batch, which finished in October last year, overall placement which we achieved was 97%, which is huge, considering that it was held in the online mode and a very less number of disciplines were there. And 20 plus companies, which are very good paymasters and have very good work environment, were added in the CDAC at Pune regional campus, which are paying 10 lakh plus salary packages. And as far as average salary package is concerned, it's been about 8 lakhs per annum for this course. So an extremely good placement figure. And to tell you more, that 276 companies visited this common campus placement program, which recruited 1,655 students. And there were some service-based organizations also which visited the campus, which included Capgemini, L&T, TCS, Tata Technologies, HCL, Tech Mahindra, Sybase, and many more. And out of these companies, 45 new companies which visited the campus, which again talks a lot about the growing popularity of the CDAC Act courses in industry. And why this is so is because of the dedicated way in which our ACTS faculty, ACTS functionaries, course coordinators, they conduct the course, and the way we always interface with industry in order to give them what they actually want. So therefore, when we firstly we have continuous programs of
revision of our syllabus. And when the revision takes place, this is not just considering the academics alone, but also a lot many people from the industry. And therefore, we make the students industry ready. We include in our syllabi the requirements from the industry, the new and upcoming requirements from the industry all the time. And this is what is actually keeping us going, and we are able to maintain that edge we have over others in this area. And students, I would like to tell you that whether you're online, whether you're offline, whenever you are engaged with CDAC, make sure that you make every moment, every minute, every second you are engaged with us count. In the sense, please imbibe all the knowledge you can from our expert faculty and people who are there all the time to teach you, to guide you, to mentor you. Because this is not only just theoretical what you are going to imbibe, a lot of practical knowledge, a lot of knowledge of on-ground projects which people carry with them, it will be given to you. So therefore, don't hesitate to ask questions. Don't hesitate to be curious. Don't hesitate to be inquisitive. Because what you have in front of you is a whole lot of opportunity to learn, to create, because you will be given the freedom to choose projects. So create what you want, create what you have been dreaming about during these 6 months. You will be there with us on our campus, offline or online. I would have loved to have you online, offline here in physical mode as fast as possible. But however, conditions prevailing today, बोर मारतो तो हाँ मम्मा I'm sure from the next course onwards, we'll all be in the same campus and we'll see each other. So, with these words, I wish you all the very best for this coming 6 months with us. Make it all count, and for all the parents, also I heartily congratulate you for having your ward being with us for this course, and assure you that we'll do the very best and leave no stone unturned in making, imbibing firstly knowledge to them, making them more knowledgeable and more industry ready. So with that, I take your leave, and extremely sorry I couldn't be there with you today because of certain exigencies. Wish you all the best. Goodbye, Jai Hind. Okay, this was the address from Nath sir. Okay, I will not take much time of yours. Okay, you must be eager to meet your faculty. Okay, everybody must have got the mail on Google Group. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now there is no problem. Everybody is receiving a mail and everything. No, ma'am. No, who said no? Aishwarya. Then how you joined the meeting, beta? I got the mail on iCloud, but I don't get the mail on my Gmail account. Okay, you don't have the Gmail account, right? No, I have Gmail account. I updated you yesterday. Oh, okay. I will add your Gmail address in there. Ma'am, Okay, I thank also you. didn't got. Who is that? Saurabh Ladda, ma'am. Okay, Saurabh, do one thing. WhatsApp me your Gmail address. Okay, ma'am. I'll check. Right, what is- right now? WhatsApp me that. Okay. Okay. Let me Ma'am, check what same. is the problem. Yes, Bharat. मैम सेम मुझे भी नहीं आ रहा है जीमेल पे ग्रुप का। गूगल ग्रुप पे आप लोग हो कि नहीं हो मुझे चेक करने दो। अगर गूगल ग्रुप पे हो आप तो आपको मेल आना ही चाहिए।
गूगल ग्रुप पे है मैम। हाँ, तो एक काम करो, अपडेट्स, प्रमोशंस, स्पैम्स सब चेक करो, उसमें हो सकता है। वन वीक। ओके ओके, ओके ओके। हाँ, स्पैम में जा रहा है मेल, यस, हो सकता है। ओके, नाथ सर ने भी वही कहा। ओके, स्पेंड एवरी मिनट टू ग्रैब द नॉलेज। ओके, राइट? Okay, so let us start with your session. एक minute. Not start. Camera start नहीं हुआ है. एक minute, video off है. Students, just bear with us for a minute. We are starting the webcam. Okay, we have Mr. Salil Bagde for your DBT faculty. You must have heard about Salil sir, right? Infoway के Salil sir के बारे में सुना होगा आप लोगों ने. So Salil sir has the experience of around 25 years. Okay, in databases. Okay, and he is our senior most faculty in Infoway. Over to you, Salil sir. Hello.
Hello, sir. Hello, good morning all. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Hello, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay, now today is the first session of our module, that is the course. Again, we are going to start with the database technology. Okay, so within few minutes, we'll be starting the lecture. But before the lecture, I would just want to know, like whether you have installed MySQL in your computers or not. No, sir. Not yet, So, sir. okay, let it be. So today what we are going to do, first I will be showing you that how the application, that is the database, MySQL database, can be installed on your computers, so that from tomorrow, as soon as we start the sessions, practical sessions, maybe today, tomorrow or day after tomorrow. Okay, so you'll be able to do the work on the computers. Okay, so any questions you want to ask? Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just give me 2 minutes. You are audible. Just give me 2 minutes. We are just adjusting a camera. Yeah, okay.
Hello. Yes, sir. Yes, You can hear me, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You're audible. Okay, so wait for a few minutes. We are just adjusting our camera. Yes, sir. Okay. No problem, sir. So how we are going to conduct the lectures? Okay, let us discuss those things so that we are not going to waste our time. Okay, so in database management system, okay, we are going to see what is a database. Then we are going to see like what are the SQL statements available in MySQL. The flow will be like this. First, we'll be completing few sessions for lecture. Okay, in that I will be just showing you, I will be just telling you, we'll just discuss like how this RDBMS, how this database works. Then we are going to see what are SQL after completing hello. Then we are going to see. Then we are going to learn PLSQL. Okay, so it is like, and after PLSQL we are going to learn NoSQL, and in NoSQL we are going to see there are different Hello? types of hello. सर तुमचा आवाज येत नव्हता. प्लीज रिपीट करता का जरा? सॉरी. Hello, sir. Just wait. Sir, please mute all. Somebody has kept their mic on. Just a minute. Dear students, it's a request. Please check whether your mic is on or no, okay? Because it is a disturbance to others also. Okay, so we request you to please check if you don't have a query, okay, your mic should be off. So students, he is Salim sir. Okay. Hello. Now the setup is ready. Sir can start. Yeah. Hello, sir. Hello. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Morning, Good sir. morning, sir. Okay. One request. Please mute yourself when you are not talking. Okay. अभी किसी का mic on था और वो सारा what do you say? जब हमने नाथ सर का ये सुन रहे थे वीडियो, उसमें भी किसी एक ने बोला बोर मारता है यार. So please check it out. Okay. So continue. Sure. Okay, so okay, we are just setting the camera, and as before, like off camera, okay, whatever I've told you, again the same thing I'll be telling you. So as madam has told me, as madam has told you, okay, this is the first module we are going to start, and that is the database technology. Okay.
in database technology, we are going to learn one of the database, that is MySQL. Okay, so that is the database which has been prescribed, which have been told, which is in your syllabus. There are different types of databases available, but as CDAC has told in your syllabus that we have to learn MySQL. So that is the basic database we are going to take, and using this basic database, okay, all the database operations we are going to perform. Okay, now in SQL, that is in MySQL, what are the things we are going to learn? How we are going to move forward? Okay, so first we are going to start with the theory portion. Okay, with the theory portion, that is maybe today and tomorrow, or maybe 2 days. Okay, we are going to complete all the theory part. And after that, okay, what are the things that is we are going to learn SQL? After completing SQL, we are going to learn PLSQL. Okay, so PLSQL is what? It is only a programming, like how the programs can be written using MySQL as a database. And this is how the CRUD operations, how the database operations, how the database interactions can be done, that we are going to learn using SQL. Okay, and after completing both these things, this is the part of MySQL. And after completing both these topics of MySQL, we are going to see what is NoSQL. So again, as I said, there are different types of databases available in NoSQL. But the thing which you are going to learn in NoSQL, that is MongoDB. Okay, and using MongoDB, the CRUD operations, like how the data can be inserted, how the data can be fetched, how the reports can be generated, how to do import, export. So all these things we are going to learn using MongoDB. Okay, so this is the flow. This is how we are going to start with the module. Okay, so before we start, any questions you want to ask? Any types of questions you want to ask, you can just ask. Okay, so if you're not asking the question, let us have a mutual understanding, that is, okay, whenever we conduct this DBT session, let us have this session interactive session. Okay, so keep the interaction with me so that I will be able to understand whether you have understood the topic or not. Otherwise, sometimes what happens, no, we are moving forward. Okay, we are moving forward, and some of the students, they lag behind because they have not understood the previous topic. Now here in any of the technology, what we are going to learn, okay, whatever technology you're going to learn in CEDAC, every topic is dependent upon the previous topic. So once you miss the previous topic, or once you miss the previous session, okay, what is going to happen in the next session, you will be not able to understand, because everything is interlinked. So wherever we have left yesterday, from that we are going to move forward. Okay, so don't miss any of the session. As I said, keep the lectures interactive. Okay, whatever questions I will be asking you, okay, you answer that questions. You have to answer that questions. If you are not answering those questions, you may be feeling that whatever answer you know, अभी ऐसा कभी होता है कि like I asked you some question and you may feel that okay, I know this answer, then why to tell, why to discuss? But it may happen like what answer you know, maybe that answer is not complete, or maybe that answer is not proper because you have not learned. Okay, so just keep the sessions interactive. And as I have told you today, like we are going to install MySQL because most of the students, they have not installed MySQL database application in your laptops or your desktops. Okay, so I will be taking one of the screens. आपको screen share करने को बोलूँगा because already
हमारे end पे at our end, all the applications has been installed and it is running. Okay, so what we are going to do, we'll just tell you, one of you to share the screen, and we will be guiding you that how the application, how the MySQL database can be installed. ठीक है, installation कैसे करेंगे? Because see, at the time of installation, there are few things that you have to keep in mind forever. ठीक है, forever. Why? Because whenever you are going to learn in the future, whenever you are going to learn some of the modules, ठीक है, database, every module will be requiring database. Okay, so you must be aware like what modules you are going to learn in the future, because you must have seen on the website that PG DAC course have this modules, and most of the modules, okay, if you are going to learn like whatever you are going to learn, database is required. Okay, so it is one of the important module, so don't bunk. Okay, keep the lectures interactive, that is very important. Primary thing, keep the lectures interactive. Okay, so that I will be able to understand whether you are knowing or not. Salil sir, Yes, students are writing question on chat. Even you can go through the chat also. okay, so you are writing and okay, so there is a question. Yes, Patil. Okay, so I have a question, sir. Are we going to learn SQL Server along with MongoDB? As I have told you, we are not going to learn Microsoft SQL Server. Okay, we are going to learn MySQL, and MySQL is a product of Oracle. Okay, so okay, now your question is okay. The question is very genuine, because as I said, like as Akshay had told, okay, whether we are going to learn MS SQL. Okay, whether we are going to learn Microsoft SQL Server. Okay, what the thing we are going to learn? Okay, what are the things we are going to learn? As I told you, we are going to make the use of MySQL as a database application. That is my base. And on the basis of MySQL database, what are the things we are going to learn? We are going to learn SQL. We are going to learn PLSQL. Now, when in the industry, like after you join some company, we don't know which industry is going to work on what database. But the primary language which is there, which works for every database, that is SQL and PLSQL. Only the thing what it changed, the database server. Okay, so either you can any of the company may use MS SQL, or some company may use Oracle, or some company may use DB2. Okay, so these are only the database servers. These are only the database server which is going to help you to get connected to the client. Okay, on the client side, we are going to perform only this thing. Okay, so once you understand how the SQL statements can be executed, or how the SQL statement performs, how to write PLSQL using MySQL. Now, if I tell you, okay, now I will be giving you SQL server, that is MySQL server. Or if I give MS SQL server as a database, then you will be able to perform, you will be able to work on any of this database, because in the backend, whenever you are firing a query, whenever you are sending the request to the server, for sending the request, you will be always using SQL, or you will be always using PLSQL. Okay, so let us not make the things right now very complicated, because as soon as we move forward, as soon as we come to this topic, we will be able to understand that how the things are working. Okay, any other questions you want to ask? So I have a question. Huh. So basically, you taught us about the roadmap of DBT and MySQL, but can you please explain us in layman language what is DBT and MySQL? That is the thing we are going to learn. No?
So we have not started. As I said, today we are just going to see how the installation of MySQL we are going to do. Okay, so as soon as we move forward, okay, the next sessions we are going to learn these things. Getting? Okay. Okay, we are going to learn these things. Okay, any other questions you want to ask? So if you have any questions, don't write in the chat box, because again I have to go to the computer. You can just switch on your mic and you can just ask me the question. Yes, any question? No, sir. No, sir. No, sir. No. Okay, so let us begin. Like installation start kare kya? Should we start installation? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Of course. Okay, so you do one thing, just switch on your computers, go to the browser, and at the time of installation, okay, at the time of installation, be sure that your internet connection is not weak. I mean, it is not losing the connection, because at the time of installation, what it does, no, it will be taking some files from the internet. ठीक है, so अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर बीच में हट जाता है, then again we have to reinstall that application. Okay, so make sure that so it is not in your hands, but still make sure that you are not changing the wires or you are not doing something else physically, because internet to provider से अगर बंद पड़ गया तो we do not have any control on that. But आपके end से, from your end, ठीक है, be sure that you are not touching at the time of installation, you are not touching the internet wire, और वाईफाई का स्विच किसने बंद नहीं किया वो चेक करो. ठीक है, so let us begin. I will be going to the computer. ठीक है, and I will Just wanted to clear. हाँ, The laptop which I will be using will be available with me by tomorrow end of the day. So can I Okay. install it tomorrow? so you can install tomorrow. Okay, no issues. Or you can install as soon as the laptop comes. So you can just install the application. But today, what you do? ठीक है, take a notepad. Note down the procedure. You note down the procedure, like what we are doing, from where the files are to be downloaded and how it is to be installed. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we hope so that everyone, like which Windows version you are using. Windows 10. Windows 10. sir. Windows 10. Windows 10. You are Windows using. 11. Windows 10. Windows 10. So Minimum I'm it is using Windows. Ubuntu. Okay, right. Windows 11. Okay, so minimum it is Windows 10, no? Yes, sir. No. Yes, sir. Yes. Yes, Sir, yes. Anyone who is using below 10? No, sir. No one. Yes, sir. Me. Sir, So I'm using it- Ubuntu. Do I need to like use Windows only? no, it is not necessary. Okay. You can install MySQL using Ubuntu also, on Ubuntu also. Okay. Okay, so that is not an issue. Okay, and whatever we are going to learn, okay, the same thing can be done on Ubuntu also, because we are not, Ubuntu is what? It is only an operating system. On that operating system, we are going to make the use. That is only the platform. What we are going to use, MySQL. So either you use Windows, either you use Ubuntu, Fedora, anything you can use it. Okay, so Okay, let sir, us okay. begin. So it won't work on anything below Windows 10. No, because see, if you nowadays, like whatever downloads we have, no, all those downloads minimum requirement is Windows 10. So if it is not Windows 10, then we have to find out that what is the operating system version, which version, what operating system you are using. So I'm using Windows 7. So what you have to do at the time of searching, no, you have to search for Windows 7. MySQL for Windows 7. Okay, sir. Okay, and then only you can install it. Yes, sir. Okay, but upgrade that Windows 7 to Windows 10. Okay, before you start the practical sessions, because see, in the future, whatever technology you are going to learn, all those technology minimum requirement Windows 10 is there. Because if you install .NET will be not working as good as which you are working in Windows 10.
ठीक है, सो तुरंत उसको फॉर्मेट करो एंड अपग्रेड टू विंडोज 10 बिकॉज .NET है, ये जो आगे के जो प्रोडक्ट्स जो थिंग्स विच यू आर गोइंग टू लर्न, ठीक है, दैट विल बी नॉट परफॉर्मिंग वेल ऑन विंडोज 7. सम ऑफ द थिंग्स इट विल बी नॉट इवन इंस्टॉल ऑन विंडोज 7. ठीक है, so any questions before we start the installation? No, No, sir. sir. No, Please sir. start. Okay, so we will just start this installation Continue, part. sir. Yeah. Okay, have you got the this thing any mail from right now for the exe file of MySQL? Yes, sir. Yes, sir. You have got that mail, no? Yes, sir. Now. Yes, sir, I got the mail. So just a minute. Now you do one thing, you just download that exe file in any of the drive, either C drive or D drive. And one of you, take any one of you, just share me your screen so that we will be able to understand what you are doing. Anyone can share the screen. So who is this? Kunal. So Kunal, what take a MySQL installer community version 8.0.26 MSI. Have you received that exe file? Everyone. Yes, sir. Yes, sir. Everyone. Okay, so you just do one thing. Just download that file in any of the drive, either C drive, whatever, wherever you feel. Hello, everyone. Has your exe file downloaded from your mail? Yes, it is downloaded, sir. Yes, sir. Everyone, no? No, sir. It's taking just 2 minutes only, please. Just we'll wait for you.
Hello. एकच मिनिट सर होते सर एकच मिनिट. Okay. Aditya Deshpande, in the chat box you have written, I have not received any mail. Yes, sir. I haven't received any mail. Just check in the spam. Okay, sir. Yes, sir. It is there in spam. Thank you. Just download it. Okay, sir. Now you always, whenever we send the mail, you always check in the spam. Because okay, so should we begin? Hope so everyone has downloaded that exe file. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now you do one thing. Now here, everyone you check. We will be going slowly so that you will be able to understand like how it is to be done. Now just click right button on that exe file. And the remaining students, if your internet is slow, okay, then note down the steps. If you are moving forward, note down the steps, what steps you are performing. And if any student faces any problem, like if it is not getting installed, don't get panic. Okay, after completing the installation, we'll tell them to share the screen and then we'll install those things. Okay, now click on install. Everyone, you just click on install. One screen will be appearing. That is installation screen. Everyone is getting this message, a window, MySQL installer community. Yes, sir. Okay, very nice. Everyone has got this screen now. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Wait, okay, wait for the instructions. Don't move ahead. ठीक है, जिसका भी कंप्यूटर इज स्लो, अगर ये स्क्रीन नहीं आया है, तो just note down the steps what we are doing. Now here this screen is telling me choose the setup type. Here there are different types of setups. Okay, the first setup is developer default. The second type is server only. The third type is client only. The fourth is full. And the last one is the custom. Okay, now MySQL server, it is always going to support client server technology. And because of that, your computer where you are installing, your computer will be working as a server as well as a client. Okay, and for that, we are going to choose the default, like whatever default developer default radio button is selected, we are not going to change it. But suppose if you are having multiple computers connected with one another, whether you have multiple, so multiple can be any, it can be 2, it can be 3, it can be any number, but it should be minimum in the network. Okay, so if you are having multiple computers connected with the network, and if you want to keep one of the computer as a server, which works only as a server, not as a client, then we are going to, then at that time we have to go to install MySQL server only.
But as I said, your computer is going to work server as well as a client. So we are not going to choose the below options. Okay, let it be developer default and click on next button. As soon as you click on next button, you may see my SQL for Visual Studio 1.2 point some number. Then connected to the Python. Okay, so these are all the drivers. So whether if you want to connect MySQL server with Python, automatically this driver will be get installed. In some of the cases, यहाँ पे only 2 options we are able to see. But some of the computers, I don't know which computer, may have multiple products. यहाँ पे आपको multiple products दिखेगा शायद, I don't know. Yes, Yes, sir. sir. I I'm have. getting Yes, 8 sir. options. You are getting 8 options. So because see, maybe in his computer, अभी ये जो Kunal है, have you installed .NET or anything apart from any other software? ठीक है, तभी यहाँ पे yes पे क्लिक करो. ठीक है, the following products. Sir, हाँ. sir, can you please repeat it? What? Means what we have to select from that 2 options? No, nothing you have to select. You have to just click on next button. Okay, sir. As soon as you click next button, you will be getting the following products which is going to install. दिख रहा है क्या ऐसा लिस्ट आपको? Yes, sir. Okay, तो वहाँ पे आपको एक सर्वर दिख रहा है. Second option is Workbench. Third option is Shell. Then the routers, then ODBC, C++ का connectors. ठीक है. Then .NET का connectors, documentation and the sample examples. ये सब आपको दिख रहा है. Okay, click on next. Okay, click on execute button. So one by one, click on execute. One by one, this product will be get installed. सर मुझे 4 ही ऑप्शंस दिख रहे हाँ, ठीक सर है, मुझे भी 4 ही ऑप्शंस दिख रहा है. कोई प्रॉब्लम नहीं sir, है. 4 options. 4 ऑप्शंस. एक काम करो, कुणाल. हेलो कुणाल. कुणाल. यस सर. हाँ, यहाँ तूने कैंसिल पे क्यों क्लिक किया? ये कैंसिल पे नहीं क्लिक किया, स्पेस बार दबाने पे ये सब आ हाँ, रहा तो था. यहाँ पे नो करो, ऐसे कुछ मत करो. मैं जो बोलता हूँ ऐसे अभी हाथ कंप्यूटर से बाहर हटाओ. यस सर. एंड तू तेरा स्क्रीन शेयर बंद कर. जिसको 4 ऑप्शंस दिख रहा है ना, एनीवन कैन शेयर द स्क्रीन. ओके सर. हेलो सर. हेलो हेलो सर, मुझे अलग स्क्रीन दिखा रहा है सर. हाँ, बताओ क्या दिख रहा है? Those products with missing बताओ. requirements हाँ, बताओ. will not be installed or upgraded. Do you want to ये continue? ओमकार है क्या ये जो बोल रहा था अभी वो? नहीं सर, अजय बात कर रहा हूँ. हाँ, तो एक काम कर ओमकार. ओमकार. सर अजय बात कर रहा हूँ. नहीं नहीं नहीं, ये जिसका स्क्रीन दिख रहा है ओमकार. Yes, sir. हाँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करो. सर मुझे 7 ऑप्शन दिख रहे हैं. ठीक है, और तेरा स्क्रीन शेयर कर दो. ओमकार, यू जस्ट स्टॉप योर स्क्रीन शेयरिंग. सर मेरे इस पे 5 ऑप्शन बता रहे हैं. हाँ, बताओ तो स्क्रीन शेयर करो. नेक्स्ट. हेलो सर. एक काम कर, तो बैक बटन पे क्लिक करो. हाँ, डेवलपर. हाँ, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो. हाँ, अभी नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो. सॉरी एग्जीक्यूट. कैंसिल नो करो, एग्जीक्यूट पे क्लिक करो. हाँ, वेट, अभी ये डाउनलोड हो रहा है. हाँ सर. अभी यहाँ पे हाँ रुको, चेक. हाँ, एंड इंस्टॉल इट. क्लोज Close कर करो. दो. हाँ, क्लोज करो.
Now click, wait, hold, oh, 1 minute. SQL Server, Workbench, Studio, Shell. हाँ, next पे click करो. Yes. हाँ, now click on Execute कर दो? execute. Yes, click on execute. Okay. Onkar, just share your screen. Stop कर दो सर शेयर. हाँ, आप stop कर दो. Thank you सर. Onkar, share your screen. Wait sir, wait. एक moment. Sir, can I share my screen? What is happening? Nothing. Yes. I'm getting 7 to 8. Just share your screen. Just show what it is showing. Yes, sir. One. सर माझी स्क्रीन हे आता माइक. हाँ, इथे agree कर. Yes, sir. आणि install म्हण. Okay. Close. त्यानंतर सर आता याच्यात नेक्स्ट करायचं आहे का? हाँ, आता इथे next कर. Yes कर. आता execute कर. आता screen Hello, share sir. बंद कर तुझं. Yes, sir. सर मी माझी स्क्रीन शेअर करू का? एक हाँ, मिनिट. करो share करो. माझी शेअर केली. अजय बंद कर ना एक मिनिट स्क्रीन तुझी. हो सर, एक मिनिट. सर स्क्रीन शेअरिंग स्टॉप केले. थँक्यू सर. Yeah. याला डायरेक्ट नेक्स्ट करू सर इथं. थांब. हाँ, ये स्क्रीन किसका है? कल्पेश. कल्पेश. हाँ, बैक करो तो 1 मिनट. बैक बटन पे क्लिक करो. हाँ, अभी नेक्स्ट पे क्लिक करो. हाँ, अभी नेक्स्ट पे क्लिक करो. यस. हाँ, एग्जीक्यूट. हाँ, जस्ट स्टॉप योर स्क्रीन. स्क्रीन शेयर बंद करो. यस सर. नेक्स्ट, यानी दूसरों को इसको प्रॉब्लम है क्या? स्क्रीन, जस्ट शेयर द स्क्रीन. No, sir. Done. Hello, yes, sir. Hello. Hello, click on execute. Hello, sir. Yeah, just 2 minutes. Sir, is Chandrasekhar, yes, sir. just stop your screen sharing. Next student, if anyone is having problem, just share your screen. सर मेरे 4 प्रोडक्ट्स ही इंस्टॉल हुए हैं. हाँ, बस स्क्रीन शेयर करो. And remaining, हाँ, just click on documentation. Just click on next. Just 2 minutes. ओके सर इन्होंने इसके बैक वाला एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ. हाँ, वही. इसको एक काम कर. अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर. हाँ, कैंसिल कर इथं. इस कैंसिल करो. yes. हाँ, yes. Just go to control panel.
Okay, should I reinstall this again? just first, just whatever things you have installed now right now, just remove those things. Go into control panel. Search. Just 2 minutes. Go to control panel. नहीं नहीं ऐसे direct मत करो. Don't do it directly. Go to control panel first. सर्च करो. हाँ वहाँ पे search करो control. Click on that control. Uninstall that product. Programs. नहीं. Last of program. Click on that. Default programs. Programs and features पे Now you just move below wherever you see MySQL, no? One by one, you just uninstall everything. Okay. Hello, sir. First, just uninstall. Sir. Just 2 minutes. तू सगळं तसं uninstall ते checkbox select करून टाक. Uninstall. आता checkbox select करून टाक. ओके. आणि नेक्स्ट कर. तसं तू uninstall कर सगळं आणि झाल्यानंतर मला सांग, मी तुझं स्क्रीन शेअर करतो. तू आता स्क्रीन शेअर बंद कर. ओके. कसं काय? शुभम हेलो यार हाँ जिसको प्रॉब्लम है जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड रिमेनिंग स्टूडेंट यू जस्ट म्यूट योर माइक. After checking requirements, I have to select next, no? Executing and next. Install. You have not started installation. No, I have started. I just executed it, and after it, I have to press next or. I just do it again. What you are doing? Let me see. There are remaining students. Hello, sir. तू पण एक काम कर. Hello. चंद्रशेखर ना ये दिस स्क्रीन इज भाग्यश्री का स्क्रीन. मेरे को ये बताओ जो स्क्रीन whatever screen it is visible, only that person you just talk to me because someone is speaking and I'm seeing some another screen. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Just 2 minutes. तू एक काम कर भाग्यश्री. हाँ सर. Go to control panel and remove all this MySQL server. Okay, sir. And the remaining things. MySQL पे जितना भी दिख रहा है ना, remove everything. Okay, sir. Yeah. Hello. Click on next. Chandrasekhar, click on next. Yes. Execute. हेलो हेलो सर. हाँ बोलो सर मेरा एक्सेप्ट करो ना स्क्रीन शेयर. जस्ट स्क्रीन शेयर करो. क्या करूँ सर अब? हाँ ऐसे ही बैठे रहो. डोंट मूव. इधर ऐसे ही रखो. लेट एवरीवन कम टू दिस स्क्रीन. यहाँ तक सबको आने दो. ओके ओके.
Yes. हेलो all सर। हाँ सर 4 ही ऑप्शन दिखा रहे हैं मेरे में। बताओ, स्क्रीन शेयर करो। Please. सर हेलो। हेलो सर। हाँ कौन? अजय। हाँ यस सर। हाँ, you just stop your screen sharing. ओके सर, थैंक यू। सर ठीक आहे, आता मग तू पाहून घे कसं मी माझं सुरू करतो. सर हेलो सर। हाँ रिमेनिंग स्टूडेंट्स एक काम करते, बेसिक इंस्टॉलेशन, हाँ यहाँ बेसिक इंस्टॉलेशन वर्क कंप्लीट कर देते हैं, या फिर ये जिसका जिसका प्रॉब्लम आ रहा है ना उनको हम लोग सॉल्व करते हैं. सो तू अभी इसको ये कर दे तो स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर. हाँ कोई तो लास्ट टाइम किसने स्क्रीन शेयर किया था वो? मैंने किया था सर। हाँ अजय। करो, स्क्रीन शेयर करो अजय. ओके। ठीक है, अभी ये देखो, एनीवन इज गेटिंग दिस स्क्रीन. ठीक है, फ्रॉम दिस स्क्रीन. हाँ, एनी ऑफ द स्टूडेंट लाइक 100 जितने भी स्टूडेंट्स, एनीवन इज गेटिंग दिस स्क्रीन. यहाँ से हम लोग आगे जाते हैं. जिनका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, ठीक है, 1 by 1 विल जस्ट सिट एंड डू द इंस्टॉलेशन. ओके, सो एवरीवन हु हैज कम टू दिस स्टेप, एवरीवन. हाँ प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन के बाद नेक्स्ट ही करना है ना सर? एक काम कर, तू तेरे को अभी ये पहले देख लो हम लोग क्या कर रहे हैं. ओके ठीक सर। है, यू जस्ट वेट. ये स्टेप्स तब तक लिख के रखो. ठीक है, सो ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव कम टू दिस स्टेप, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे ठीक है. सो दिस इज द स्क्रीन, टाइप एंड नेटवर्किंग. ठीक है, टाइप एंड नेटवर्किंग के यहाँ पे बिलो कनेक्टिविटी आपको दिख रहा है. ठीक है, कनेक्टिविटी के अंदर पोर्ट नंबर 3306 दिख रहा है. यस। ठीक है, नोट दिस नंबर, पोर्ट नंबर इसको कहीं पे तो लिख लो, बिकॉज वेन एवर यू आर गोइंग टू कनेक्ट टू माई एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, दिस पोर्ट नंबर यू विल बी रिक्वायरिंग. ठीक है, सो नोट इट डाउन समवेयर. Port number that, and 3306 is the default port number. Don't do any changes here. यहाँ पे कुछ मत change करो. And the remaining students note down what we are doing here. ठीक है, यहाँ पे कुछ मत करो. Click on next button. नेक्स्ट। हाँ, next button पे click करो. ठीक है, don't do anything here. यहाँ पे भी आप लोग कुछ मत करो, because you are just normal first time users. यहाँ पे आप कुछ मत करो. Just click on next. नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट पे क्लिक करो. अभी यहाँ पे आपको माई एसक्यूएल रूट का पासवर्ड देना है. ठीक है, वो वॉट एवर पासवर्ड यू गिव, यू रिमेंबर दैट पासवर्ड, दैट इज द रूट पासवर्ड. इफ यू फॉरगेट द रूट पासवर्ड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द पासवर्ड ऑफ द रूट. इट विल बी ऑलवेज बेटर देन रूट का पासवर्ड वापस चेंज करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं उस. ठीक है, तो ये पासवर्ड भूलो मत. So just give whatever password you want to give for the root. You just give it. But याद रखो, retype that password. So everyone has given the password. Those who have come to this screen. यस सर। चलो सर। वीक दिख रहा है ना पासवर्ड? हाँ, पासवर्ड स्ट्रेंथ वीक दिख रहा है ना? हाँ तो चलने देना. ऐसे भी अपना तेरा ही लैपटॉप है ना, ऐसे कोई बाहर का कोई यूज करने वाला नहीं है. ओके ओके सर। तो इतना भी बहुत बड़ा हो गया है. ओके, अभी यहाँ पे क्या करो, नीचे नेक्स्ट बटन दिख रहा है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो.
ठीक है, यहाँ पे आपको एक विंडोज सर्विस नेम दिखेगा. नथिंग इज टू बी चेंज. आई एम जस्ट टेलिंग यू. ठीक है, विंडोज सर्विसेज के अंदर विंडोज सर्वर नेम एंड विद इन द टेक्स्ट व्हाट इट इज शोइंग यू MySQL 80. ठीक है, so that is the default service name. Whenever we start the computer, MySQL server will be executing automatically this service. अगर ये सर्विस मेमोरी में स्टार्ट नहीं है, that indicates your MySQL server is not loaded. It is not going to work. Okay, so I'll be showing you. ये आपको मैं बताऊंगा कि भाई ये कहां से देखना है. यहाँ पे आपको कुछ नहीं चेंज करना है, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. ओके, सो आपको एप्लीकेशन अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन दिख रहे हैं क्या सबको? अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन का स्क्रीन. यस सर, यस सर. हाँ, वहां पे नीचे एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करो. ओके. हेलो. हेलो हेलो. हाँ सर. नहीं, तू रुक. तेरा ये स्टेप्स हो गया क्या सबका? अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन. सर हो गए. यस सर. फिनिश बटन एक्टिवेट हो गया होगा. यस सर. हाँ, यस सर. फिनिश. हाँ, क्लिक ऑन दैट फिनिश बटन. ओके. Now wait. Again, it is showing us the screen. Product configuration. Okay, नीचे 3 products are visible: server, router, and samples and examples. ये 3 options दिख रहे हैं क्या? Products के अंदर. Yes, sir. Click on next button. Okay, just click on finish button. Again, it is asking you for the product configuration. Click on next. Okay, so whatever password you have given for the root, retype that password and click on check button. As soon as you click on check, at the top status के अंदर देखो connection succeeded आ रहा है. Yes sir. That indicates password is. Click on next button. Okay, now click on execute. So internally it is going to run some script files. जो हमने examples and demos जो किए थे ना, वो उसका script file वो run कर रहा है. दोनों रेडियो बटन को चेक बॉक्स आ गया क्या? हमें रेडियो बटन को टिक आ गया क्या? Yes, sir. Yes sir. Click on finish. Okay, now click on next again. Okay, so now this is the final step. As soon as you click on finish, what it does, it starts MySQL workbench and it is going to start MySQL shell. Okay, click on finish. So you will be able to see 2 different screens. This is my shell और पीछे जो दिख रहा है वो workbench दिख रहा है. Everyone is getting these 2 screens? Yes sir. Yes sir. Okay, so that indicates whoever is getting this screen, that indicates your MySQL server has been installed properly, and so now onwards you can start working on that database. Now यहाँ पे ये जो MySQL JS black screen दिख रहा है ना, वहां से /quit दे दो. स्क्रीन पे लिखा है देखो /quit to exit. Give /quit. So that will be stopping the shell. यहाँ पे देखो आपके सामने दिख रहा है. Yes sir. Type /help और /question for help और उसके बाद में दिख रहा है /quit to exit. स्क्रीन को एग्जिट कर दो. एग्जिट. बराबर दे दो. टाइप करो, अभी क्विट लिखो.
वहां पे लिखा है ना, कोट्स में लिखा है ना बैकस्लैश एंड क्विट, ओके 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 वो टाइप करो। एंटर। अब ये वर्क बेंच को भी बंद करो। ठीक है, अभी जिसने भी वो शेल एंड वर्क बेंच जो बंद करके अब भी रखा हुआ है, ठीक है, यू जस्ट बी सीटेड, डोंट लीव द मीटिंग, डोंट गो एनीवेयर। रिमेनिंग स्टूडेंट्स जिनका प्रॉब्लम हो रहे हैं इंस्टॉलेशन को, ठीक है, मेरा हाँ नहीं हो तो रहा है। हाँ तो आप स्क्रीन शेयर करो, वन बाय वन स्क्रीन शेयर करो, सो दैट स्टॉप कर दूं सर मैं? हाँ यू कैन स्टॉप द स्क्रीन। ओके सर, थैंक यू। सर आई हैव क्वेश्चन। सर इसके आगे क्या करना है? इसके आगे, अरे उस पे आपने स्टेप्स नहीं लिख के रखे क्या? लिख के यूजर ऐड करना है क्या नहीं नीचे? नहीं कुछ नहीं, वो तुमने यूजर को वहां पे कुछ नहीं किया है ना, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। हाँ यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करो। अभी तूने जो स्टेप्स नोट डाउन किए है ना, एग्जीक्यूट करना है ना इधर से? हाँ यहाँ से एग्जीक्यूट करो। ठीक है, यू स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग। ओके सर। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, मेरे इसमें 5 प्रोडक्ट इंस्टॉल हुए हैं। हमें स्क्रीन शेयर करो। अब भी किसने स्क्रीन को शेयर किया था? जस्ट शेयर इट। सर मैंने किया था। हाँ करो शेयर, क्या किया है? ये किसका स्क्रीन है अभी? रुजुता सर। हाँ नेक्स्ट। तूने अभी जो अनइंस्टॉल किया था वो तू ही है ना? नहीं सर। हाँ नेक्स्ट पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। तूने वहां पे तूने गलत इंस्टॉलेशन किया, एक काम कर, हाँ अनइंस्टॉल करो, ओके सर। पूरा अनइंस्टॉल करो। ठीक है सर। कंट्रोल, गो टू कंट्रोल पैनल एंड रिमूव एवरीथिंग। ओके सर। या हेलो। स्क्रीन शेयर स्टॉप करना वाले सरकारी। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ सर, मैं अभी यहाँ पे पासवर्ड का मुझे एक मैसेज आ रहा है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर ये मैंने कर चुका हूँ, निखिल बात कर रहा हूँ। हाँ तो एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करो। हाँ अभी तो स्क्रीन शेयर बंद कर निखिल। और पासवर्ड का किसको प्रॉब्लम था? सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हेलो। हाँ बराबर है, अभी नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेक्स्ट पे क्लिक करना है ना सर? हाँ नेक्स्ट पे क्लिक करो। अच्छा ओके। तो कैप्स लॉक तेरा ऑन रहेगा। कैप्स लॉक बंद करो, टाइप द पासवर्ड एंड रिमेंबर दिस पासवर्ड। ओके सर। नेक्स्ट। सर हेलो। हाँ बोलो। एक्चुअली सर मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल था MySQL, तो मैं बस ये चेक करना चाहता हूँ कि उसका पासवर्ड कैसे पता चलेगा, या फिर वो कनेक्टेड है क्या ऑलरेडी? तो रूट का पासवर्ड है क्या तेरा? लेकिन हाँ रूट का पता है मुझे। हाँ तो रूट से लॉगिन करना। स्क्रीन शेयर करता हूँ सर मैं। हाँ करो। कैन यू सी? नहीं, जस्ट शेयर योर एंटायर डेस्कटॉप। कैन यू सी ना? हाँ यस। ये देखिए सर इंस्टॉल है ऑलरेडी और इस तरह का दिख रहा है। हाँ तो जो आदित्य लिखा है ना उस पर क्लिक करो, तो लोकल इंस्टेंस, हाँ उस पर क्लिक करो। हाँ कनेक्टेड है, काम कर रहा है तेरा। काम कर रहा है, ओके ओके। यस। थैंक यू। तूने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया था? 8.27 समथिंग था। यहाँ पे लिखो, ये स्टार जो है ना, रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम दैट स्टार ऑनवर्ड्स। सिलेक्ट लिखा है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो सिलेक्ट को रहने दो और बाकी का सब हटा दो।
हाँ यहाँ पे Excuse me, लिखो sir. हाँ Can I share the screen after this? हाँ यहाँ पे लिखो वर्जन VERSION पैरेंथेसिस हाँ एग्जीक्यूट दिस एंटर सेमीकोलन दे तो एंटर नहीं होगा सेमीकोलन और ऊपर देखो यहाँ पे एक ऐसा आइकन दिख रहा है फर्स्ट आइकन सेव के बाजू में हाँ हाँ नीचे हाँ क्लिक ऑन दैट सो नीचे वर्जन दिख रहा है हाँ 8.0 ठीक है स्टॉप शेयरिंग यस सर या हेलो नेक्स्ट सर कैन आई शेयर द स्क्रीन Sir. हाँ अब भी कोई लड़की थी नहीं जस्ट शेयर योर स्क्रीन Yes, sir. तो स्टॉप हुआ मेरा हाँ हो गया ओके यस हेलो Sir, is it visible? हाँ Sir, what should I do now? तूने यहाँ पे कुछ तो चेंज किया था क्या समवेयर No, sir. नहीं पॉसिबल ही नहीं बिकॉज होस्ट नेम एंड द पोर्ट नंबर एंड तूने कुछ तो गलत अलग किया है बिकॉज यहाँ पे आपको होस्ट नेम क्या दिख रहा था you do one thing you just cancel it and reinstall Okay, sir. यहाँ से कैंसिल करो कैंसिल बटन पे क्लिक करो हाँ हेलो सर अभी वहाँ जस्ट कैंसिल इट हेलो सर जस्ट ए मिनट अभी वहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाके सब अनइंस्टॉलेशन करो Okay, sir. हाँ स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग हेलो सर हाँ हेलो हाँ सर वो सेटअप फेल का मैसेज आ रहा है बताओ क्या आ रहा सर है एक स्क्रीन शेयर करो इसके आगे इसके आगे हेलो सर MySQL हाँ just 2 minutes MySQL try to resolve the requirement there's nothing to need to do अभी एक काम कर नेक्स्ट पे क्लिक कर तो यस कर हाँ क्लिक ऑन आपका स्क्रीन फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है उसका नहीं है वहाँ पे एग्जीक्यूट या नेक्स्ट क्या एग्जीक्यूट दिख रहा है क्या एग्जीक्यूट आया सर हाँ एग्जीक्यूट पे क्लिक करो वेट ओके तू जस्ट स्टॉप योर स्क्रीन शेयरिंग सर हेलो सर हाँ सेटअप फेल का मैसेज आ रहा है अनदर वर्जन इज अवेलेबल ये किसका स्क्रीन है सर शुभम शिरसाट से यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करो एग्जीक्यूट यस हेलो सर ठीक है यू कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग ये किसका है शुभम वो कोई लड़की को कोई तो प्रॉब्लम था ना तेजश्री हाँ यस सर जस्ट शेयर योर स्क्रीन सर मैंने वो शेयर योर स्क्रीन हाँ ये मैसेज आ रहा है स्क्रीन शेयर करो तेरा तूने पूरा का पूरा डेस्कटॉप शेयर करो
हाँ, क्या मैसेज आ रहा है? सेटअप फेल्ड, अनदर वर्जन ऑफ दिस। तू पूरा डेस्कटॉप शेयर कर। तेजस्वी, तेरे पास ऑलरेडी MySQL सर्वर था क्या पहले से? वो मैंने अनइंस्टॉल किए MySQL के जितने भी फाइल्स थे कंट्रोल पैनल में। हेलो सर। हाँ, हाँ, मैंने वो MySQL के जितने भी फाइल्स थे वो। तेरे को 2 वर्जन्स दिख रहा है ना? हाँ, वो ऐसा। हाँ, तो तेरे पास ऑलरेडी था तो मेरे को पहले बोलना चाहिए था ना, बिकॉज अगर होता तो फिर अलग इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। पर आप कौन सी फाइल अभी रिमेनिंग एक काम करो, पूरा अनइंस्टॉल करो, वापिस ये अनइंस्टॉल करो। मैंने वो MySQL की फाइल अनइंस्टॉल की है सभी फाइल। बता। फिर भी ये मैसेज आ रहा है। हेलो तेजश्री, हाँ हाँ, यस सर। कंट्रोल पैनल में जाओ अभी। हाँ यस। हाँ यस सर। आपने डेस्कटॉप शेयर किया है क्या? आपका कंट्रोल पैनल दिख भी नहीं रहा है मुझे। यहाँ शेयर किया है मैंने। नहीं, आपका दिख नहीं रहा है। आपने डेस्कटॉप शेयर नहीं किया है, आपने सिर्फ ये सिर्फ कंप्यूटर का ये शेयर किया। पूरा डेस्कटॉप स्क्रीन शेयर करो, शेयरिंग स्टॉप करो, और जब स्क्रीन शेयर करते हो तो वहाँ पे लिख के आता है फर्स्ट बॉक्स में ही डेस्कटॉप शेयर, तो वो करो। ओके ओके। पूरी स्क्रीन ना? माझं सुरू कर। हेलो सर। हाँ, नेक्स्ट कर फास्ट। नेक्स्ट कर तू, मी सांगतोय नेक्स्ट कर. येस कर. इथून पुढे तुला स्टेप्स माहिती आहेत. शुभम, हेलो सर. तुला नेक्स्ट स्टेप. एक मिनिट, 1 मिनिट. हाँ सर. आपण कुठतरी एक डिफाइन करतो. नंतर एक्स्टर्नल मध्ये मल्टिपल फाइल्स मध्ये एक यूज करतो. हा स्टडी पण आहे आणि त्याचं मल्टिपल फाइल मध्ये यूज करायचं. हेलो सर. डेफिनेशन पण त्याच्या डिफरन्स चालत पाहिजे. म्हणजे काय त्याचे इनर इंटरप्रेट सर. Hello. I am telling you, sir is going to start with the lecture. After lecture, we will install with the remaining of the students who are left. So now leave it as it is. Don't do anything. Sir is going to start with the theory lecture. So focus on the lecture first.
हेलो। Hello. Hello, sir. Hello, We'll do one thing. ठीक है, because like it is getting chaos. ठीक है, so what we are going to do, we'll be starting with the lecture, and after the lecture, ठीक है, don't leave the meeting. Your lecture is till 1 o'clock, no? Today. Yes, sir. Yes, sir. So we'll Yes, do sir. one thing. We will do one thing till 12 o'clock. ठीक है, we'll decide how much theory part we are going to cover, and after that, ठीक है, don't leave the meeting. ठीक है, system admin, I mean Omkar sir, ठीक है, he will be guiding you for the remaining things, like those students who have not installed the this thing MySQL server properly. ठीक है, one by one we'll just share the screen, and we will be installing those things. Okay, so let us not make the things very complicated, because we feel the things are getting complicated because हमारा कैसे ये मैच नहीं हो रहा है because of the speed. So just a minute. I'll just share my screen. Okay, now one thing you keep in mind, whenever we tell you to share the screen, no? Okay, most of the students we have noticed they are sharing only the window. Okay, don't do it like this, because we are not able to understand, because you are telling some. Hello. एक काम करो, जिसने भी माइक अनम्यूट रखा है उसको म्यूट करो. अक्षय, just mute your mic. अक्षय, ठीक है, आई वाज ओनली. ओके, सो हमने बहुत कियोस देखा था कि लाइक स्टूडेंट, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डे, सो नो प्रॉब्लम इट इज. ठीक है, whenever we tell you to share the screen, no, we have noticed that what you are doing, some of the students they are just sharing the window on the window which they are working. वैसे मत करो. क्या करो, जैसे ही आप लोग स्क्रीन शेयर पे क्लिक करोगे ना, तो आपको बहुत सारे टैब्स दिखेंगे. फ्रॉम दैट टैब, द वेरी फर्स्ट टैब, ठीक है, द टाइटल रिटर्न इज स्क्रीन. ठीक है, टाइटल रिटर्न इज स्क्रीन. ठीक है, उस पे स्क्रीन को सिलेक्ट करो, स्क्रीन पे सिलेक्ट करो, एंड देन यू जस्ट शेयर बटन पे क्लिक करो, सो द एंटायर डेस्कटॉप विल बी गेट शेयर. ठीक है, सो आई एम अगेन, एज आई टोल्ड यू, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. So can you see my desktop? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Okay. sir. Okay. So now let us begin with the theory session. As I said, today and maybe tomorrow. Hello. ठीक है, you just don't unmute your mic because unknowingly आप क्या करते हो, माइक को अनम्यूट कर देते हो.
So multiple voices are coming. So try to avoid all those things. Don't make the things complicated. So let us begin. Okay, so as we have discussed, okay, as we have discussed that we are going to start with the very first module, and that is a database technology. And in that technology, we are going to learn MySQL. Okay, so now this is only the theory portion. So we will be making the use of slides as well whenever required. I will be shifting to the whiteboard, and the things which are to be taught on the whiteboard, at that time I will be using the whiteboard. But जहां जहां मेरे को लगता है कि भाई यहाँ पे ओनली थ्योरी पार्ट इज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द व्हाइट बोर्ड, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ स्क्रीन पे वॉट एवर वी सी वी आर गोइंग टू लर्न. नाउ व्हाई दिस थिंग्स वी आर डूइंग, बिकॉज एज द lectures are conducting online, lectures online hai, so you should have certain materials, and that is because of that, okay, we have created the slides so that these slides can be shared with you so that you can start reading the contents whatever given in the slides. Okay, and that is the basic reason for preparing the slides. In this file there are almost more than 500, ये जो फाइल है ना PowerPoint का, इसके अंदर almost more than 500 slides are there. So we're starting from the theory portion till the ending, till the last day of our lecture, everything has been mentioned here, along with the examples, along with the syntaxes. So at the time of learning on the whiteboard, because कैसे होता है पता है क्या कि sometimes internet का issues होता है. If you are sitting in the classroom, ठीक है, then whatever we tell you will be able to see on the board. But ऑनलाइन के अंदर कैसे होता है कि भी किसका अगर इंटरनेट कनेक्शन फेल हो गया एंड एट दैट टाइम आई वाज जस्ट शोइंग यू समथिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, तो उनको वो दिखता नहीं है, ठीक है, इसके लिए हमने ये स्लाइड्स बना के रखे हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज यू हैव टू कीप इन माइंड. सो बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट टेल मी विच आर द टेक्नोलॉजीज टिल नाउ, ठीक है, नॉट नेसेसरी द टेक्नोलॉजीज यू हैव लर्न, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स मे बी some of the students must have done BE in non-IT, ठीक है, नॉन आईटी में आपने BE किया होगा, बट इवन तो अगर आईटी में किया नॉन आईटी में किया, ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर आपने सी सीखा रहेगा, यस और नो? यस सर. आपने सी सीखा है? यस सर. ओके, वेरी नाइस. ओके, सो नो सर. नहीं सीखा. सो अगर सी सीखा है, सी नहीं सीखा, डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर लर्निंग डेटाबेस. But if you are having some knowledge of any of the programming language or any of the computer related language, not necessary you should know Oracle, not necessary you should know MySQL, not necessary he should know Java, .NET. But if you are knowing all those things, okay, that will be adding at the time, okay, all those things whatever you learned previously, all those things will be adding at the time of learning the actual modules in the करिकुलम लाइक सीडैक के कोर्स के अंदर, ठीक है. सो हम स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने बोला कि आज का लेक्चर, ठीक है, जो भी पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट डे व्हाट एवर वी लर्न, ऑल द नेक्स्ट डेज लेक्चर विल बी डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस लेक्चर. सो डोंट मिस, डोंट, ठीक है, बंक एनी लेक्चर. इफ यू हैव एनी डाउट्स, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो तुरंत when the lectures are going on or at the time of practical, you just solve your doubts. Don't keep your doubts pending. अगर pending रखते हो, because you sometimes you may feel shy कि भाई यार इतना छोटा सा है, सर को क्यों पूछूं, बाकी के स्टूडेंट्स क्या पूछेंगे, because everyone is online. क्लासरूम में होता तो तुम लोग क्या कर सकते थे, साइड में जाके मेरे को पूछ सकते थे, बट ये तो ऑनलाइन है, तो किसको किसको शर्म आएगा कि भाई हाउ, ठीक है, बस डोंट फील एनी, ठीक है, डोंट फील शाय.
whatever question you want to ask, you can just ask me. If the questions which you have asked, which is not related to the current topic, okay, and if I feel that this question is not to be discussed today, because those things we are going to learn in the future, उनको मैं बता दूंगा कि भी ठीक है अभी नहीं, अब लोग उसको बाद में देखते हैं. So that doesn't mean कि भी those answers will be not solved. ठीक है, because as I said, अभी एक सुबह किसका तो क्वेश्चन था कि भी my MS SQL सर्वर with MongoDB कर सकते हैं क्या. ठीक है, तो जेन्युइन क्वेश्चन था. ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू लर्न MS SQL सर्वर, बट एज डेटाबेस टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग MySQL कर रहे हैं, एंड वॉट एवर थिंग्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म will be performed on MySQL databases only. In the future, as soon as we move forward, ठीक है, we will be comparing few things. जैसे अगर comparison करना है कि भाई अगर if I do something in MySQL, can the same thing, can those same things can be done in Oracle or not? It can be done. ठीक है, so wherever I feel कि भाई यहाँ पे मेरे को दूसरे डेटाबेस के साथ भी मेरे को कंपैरिजन करके आपको दिखाना है, ठीक है, तो वहां पे आपको मैं बता दूंगा. ठीक है, सो हम लोग एकदम फुल आधा सेशन MySQL लेके आधा सेशन Oracle लेके नहीं करेंगे. जहां जहां इफ आई फील कि यहाँ पे हमको आपको डिफरेंस बताना चाहिए MySQL और Oracle, तो वहां पे मैं बता दूंगा. Now one thing you have to keep in mind, that is whatever I have written here, that जैसे when you learn C, whether C is case sensitive or not case sensitive, केस सेंसिटिव है या नहीं है, केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है. ठीक है, सो सी के अंदर whenever you are writing any of the commands, ठीक है, all those commands are case sensitive. So if you want to write printf, scanf, anything, it is to be always written in a lowercase because it is a case sensitive programming language. And just like C, every statement you terminate a statement by giving a semicolon. ठीक है, these two things you have to keep in mind. कि सी के अंदर जैसे हम लोग स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते हैं बाय गिविंग अ सेमीकोलन, इन द सिमिलर मैनर whenever you are performing SQL, whenever you are performing SQL statements, every statement is to be terminated by giving a semicolon. It is mandatory. अगर नहीं दिया तो देखते हैं, if I don't give, then what is going to happen. जब तक तुम विजुअलाइज देखोगे नहीं, till then you will be not able to understand कि नहीं देने से क्या होगा. बट यहाँ पे एक चीज याद रखो, MySQL database is not case sensitive. ठीक है, MySQL database is not case sensitive. So if you write a letter A in capital case and if you write the letter A in lowercase a, it will be treating as a normal character A. It is not going to differentiate whether it is a capital letter A or whether it is a lowercase a. So MySQL is not case sensitive. अभी देखो तुरंत मेरे को कंपैरिजन करना पड़ा, क्यों, कैसे, किसके साथ. अगर आप जॉब पे लगते हो, इफ यू आर आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड इन वन ऑफ द कंपनी, इफ दैट कंपनी इज वर्किंग इन Oracle, so you cannot have, ठीक है, whatever things you have learned in MySQL doesn't mean everything will be working in Oracle. ठीक है, slight changes, the concepts remains the same. Concepts remains the same, slight changes in the syntax, and that is very minute changes. Very minute changes in the syntax will be there if you shift from MySQL to Oracle. ठीक है, तो पहला एक डिफरेंस बता देता हूँ कि MySQL जैसे केस सेंसिटिव नहीं है, Oracle is 100% केस सेंसिटिव. वहां पे कैपिटल लेटर A and लोअर केस a will be treated as two separate entities. ये चीज याद रखो. बट एज आई सेड, हम लोग MySQL कर रहे हैं, तो क्या क्या MySQL में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं. ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ऑन द बोर्ड, दैट इज इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू लर्न SQL, वी आर गोइंग टू लर्न PL SQL, as well as we are going to learn NoSQL, and in NoSQL we are going to keep focus. ठीक है, we are going to keep focus only on MongoDB, because NoSQL के अंदर भी बहुत सारे databases होते हैं, but it is not possible to learn each and every database because that is not mentioned. So we are just going to keep focus on MongoDB as a NoSQL database, and all the
operations will be performed. Okay, now let us move ahead. Now tell me, like anyone wants to develop a good application, then how you are going to do? अगर आपको एक कोई तो एक अच्छा सा एप्लीकेशन बनाना है ना, कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप क्या करोगे? आपका रिक्वायरमेंट क्या अच्छा रहेगा? बनाएंगे सर, क्या करेंगे? यूआई अच्छा बनाएंगे, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर यूजर इंटरफेस अच्छा बनाएंगे सर। क्या बनाएंगे? यूजर इंटरफेस उसका अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, यूजर इंटरफेस अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, वेरी नाइस। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, सॉफ्टवेयर सिंपल टू यूज होना चाहिए। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस। सो दैट मींस व्हाट? वो बग फ्री होना चाहिए। बराबर। बैकएंड स्ट्रांग होना चाहिए बहुत ज्यादा। बराबर, वेरी नाइस। सिंपल एंड सिंपल इजी और टू यूज स्टूपिड हुआ होना तो चाहिए, सबसे अच्छा हो जैसे जाएगा। यस, वेरी नाइस। सिंपल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, बग्स नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर बग्स आता है और अगर कोई ट्रांजैक्शन करते टाइम अगर मेरे को बग आ गया या ट्रांजैक्शन में फेल, your system will be get crash, your application will be, So it must have the data interlink process. it should have a data interlink means what? Having a great database means. बोलता है ना, it should be secure. It should be secure. Very nice. But security कौन देता है? Who makes the thing secure? ठीक है, as I said, keep the lectures interactive, because जितना आप बोलोगे ना उतने से मेरे को पता चलेगा कि भी आपको कौन से लेवल तक आपको लेके जाना है। ठीक है, आपको कितना पता है, हाउ फार यू कैन थिंक, आप कितना सोच सकते हो। ठीक है, आप जितना सोच सकते हो उससे आगे हमको जाना है, बिकॉज आफ्टर ऑल लर्निंग, ठीक है, एनी टेक्नोलॉजी लर्निंग इट इज वेरी सिंपल, बट आफ्टर लर्निंग ऑन दैट टेक्नोलॉजी वी वांट टू अक्वायर अ जॉब। उस पर मेरे को सीखने के बाद मेरे को उस पर जॉब लेना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ थोड़ा बहुत नॉलेज, हमको तो टारगेट क्या रखना है? फाइनल टारगेट, व्हाट इंडस्ट्री रिक्वायर्स। ठीक है, व्हाट इंडस्ट्री रिक्वायर्स। सपोज इफ यू आर गेटिंग प्लेस्ड, व्हाट इंडस्ट्री विल बी एक्सपेक्टिंग यू फ्रॉम यू, कि भाई डेटाबेस में कितना आना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कितना लेवल तक आना चाहिए। और जितना लेवल आपका बढ़ेगा, आपका कॉम्पिटिशन, बिकॉज योर कॉम्पिटिशन विल बी मोर देन some number of students in one batch. ठीक है, in one batch hundreds of students have taken the admission. तो जब प्लेसमेंट होगा तब आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उसके साथ आपको compete करना है और उनमें से आपको बेस्ट रहना है। सो जितना पढ़ोगे उतना आप compete कर सकोगे, उतना आप दूसरे स्टूडेंट के आगे रह सकोगे। So as I said, whatever things you know, you just tell me whether it is right or wrong. Let me decide. Okay, don't decide your answers. Whether your answer is right, I will be telling, okay, very nice, it is good, it is right. If it is wrong, then I will be telling you why this is wrong. Okay, so once again I'm telling you, because already you have answered this question. Okay, if anyone wants to develop a good application, someone had tell me कि भी उसका UI में होना चाहिए, किसने तो बोला कि भी सॉफ्टवेयर इजी होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कोई ने तो बोला कि भी डेटाबेस होना चाहिए। वेरी नाइस, बिकॉज सी आफ्टर ऑल व्हेनेवर यू आर गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम द पर्सन हु इज ऑपरेटिंग एन एप्लीकेशन, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज इन्वॉल्व होते हैं। देयर विल बी अ यूजर, अ पर्सन हु इज गोइंग टू ऑपरेट वन एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर वो यूज करने वाला है। सॉफ्टवेयर पर्सन को क्या प्रोवाइड करेगा? एक यूआई प्रोवाइड करेगा, एंड एप्लीकेशन इज गेटिंग डेवलप्ड। बट नाउ इफ यू वांट टू डेवलप एन यूआई, if you want to develop a database, उसको layers बोलते हैं ना, उसको layers बोलते हैं। ठीक है, तो आपको तो क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप तो एक तो प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन टायर होना चाहिए। प्रेजेंटेशन टायर के अंदर क्या होता है? पूरा का पूरा यूआई डिजाइन करते हो।
Okay, so whenever you are developing any application, that application is been divided into three different architecture, 3 different layers, 3 different tiers. First tier is the UI. The UI is the page, or UI is the thing that a normal user is going to see. नॉर्मल यूजर को क्या दिखता है? यूआई दिखता है. अगर मैं कोई टिकट बुक कर रहा हूं तो हमको क्या दिखता है? यूआई दिखता है. वहां से हम लोग टिकट्स बुक करते हैं, एनी टाइप ऑफ टिकट, any type of booking. You are going to first see the user interface. That is my presentation layer. After filling the forms, after doing some things, जैसे अब मेरे को बोला कि भाई सीडैक का आपको फॉर्म भरना है. What you have done, you have registered. As soon as you click on register, they have shown you one page. In that page, it was asking you for the personal information. So what you have done, on that UI page, you have given your personal information, whatever information you have given, that is right. And after that, there was one button. As soon as you click on that button, your information was got stored. कहाँ पे स्टोर हुआ? सीडैक के पास स्टोर हुआ. बट आपको स्टोर हुआ है कि नहीं, आपको पता चला क्या? नहीं पता चला. बट सीडैक को पता है. व्हाई? बिकॉज आपका डेटा वहां पे जा चुका है. आपने तो क्या किया था? सीडैक का x.cdac.in ये पेज को ओपन किया, वो तो मेरा यूआई बन गया. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट, दैट इज द वेरी फर्स्ट टायर that you are going to do. After that, what happens? Whatever data I have inserted in the text boxes, whatever screen I get, उसके अंदर information, जैसे हमने login किया, Gmail को login करना है, what you do? It is going to ask you for the username and the password. As soon as you give the username and password, you click on a button. As soon as you click on a button, something is happening. What is happening? In the back end, ठीक है, in somewhere bit in the back end, what it is doing? It is checking whatever user and password you have given, whether it is proper or not. If yes, it is going to redirect to some another page. If no, it is going to show me an error message that is the user or the password whatever you have entered is invalid. So हमको दो प्रोसेस होता है, वो कुछ तो प्रोसेस करता है, वो कौन करता है? ठीक है. So there is something called as a middle layer. So whatever data we pass through the user interface, that data will be get processed after clicking on some buttons. That data will be get processed by the middle layer. That is my application layer, where we are writing some logic. And now you can write a logic either by making the use of any, if you are creating a web-based application, you can use any technology that supports client server technology. Jesse, you can make use of PHP, you can make the use of Java, you can make use of a .NET. So ये कोई भी लैंग्वेज यूज करके आप लोग क्या करते हो? मिडिल लेयर बनाते हो, वहां पे आप प्रोग्राम लिखते हो. ठीक है. फिर वो प्रोग्राम क्या करता है? फ्रंट एंड से जो डेटा आता है उसको ले लेता है, उसको कलेक्ट करता है, उसको कैप्चर करता है. फिर मिडिल लेयर मेरा प्रोग्राम क्या करेगा? उसको वैलिडेट करेगा, और वैलिडेट करने के बाद if it feels after validation, all my criteria are getting satisfied, then what? The valid data will be now get stored into the database. And this is how, whenever you want to develop an application, this is how the applications can be developed. And for every layer, there will be separate teams. एक ही कोई बंदा, only one person is not going to design an UI. He is not going to write a code. He is not going to even design the database. There will be separate teams. हाँ, अगर स्मॉल स्केल कंपनी में जाओगे, वहां पे 10-15 लोग काम करते होंगे, वहां पे आपको सब करना पड़ेगा. But in the bigger companies, you will be just working either on UI, you will be working either on the middle layer by using any technology, either PHP, Java, .NET, anything, or you may be working only on the backend, that is the database. And here, database I have highlighted, I have made it red color. Why? Because this is the technology we are going to learn in the first module. Okay, so as a programmer, so if you become a programmer, if you become a programmer should understand and able to interact with the database is must.
ठीक है, अगर तुम प्रोग्रामर बनते हो तो प्रोग्रामर को डेटाबेस के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है वो जानना जरूरी है. व्हाई? बिकॉज द प्रोग्रामर इज गोइंग टू राइट the programmer is going to write a logic that is going to get connected with the database. The programmer is going to write the statements in the program which will be helping to store the data in the database. So as a programmer, you should have a little bit knowledge of a database and 100% knowledge of a writing of a program. ठीक है, आप लोग एज अ प्रोग्रामर काम करने वाले हो. सो जैसे तुम लोग प्रोग्रामर जैसे काम करोगे, यू विल बी नॉट एबल टू, ठीक है, इन द इंडस्ट्री, whenever you join in the industry as a programmer, you will be not able to design a database. आपको डेटाबेस डिजाइन करने को नहीं मिलेगा. आपको क्या मिलेगा? ऑलरेडी द डेटाबेस विल बी डिजाइन बाय सम पर्सन. ठीक है, जो डिजाइनर होता है, डेटाबेस डिजाइनर्स जो होते हैं, वो आपको सब डेटाबेस डिजाइन करके रखेंगे और आपको क्या बोलेंगे? ओके, दीज आर द फ्यू ऑब्जेक्ट्स which is available in the database. Use these objects and you write a code so that the interaction with your program with the database will happen. ठीक है, सो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग सीधा सिर्फ बैकएंड पे काम करने वाले हैं. ओके, सो नाउ यूज केस. ठीक है, यूज केस. बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा का पूरा लाइक आफ्टर लर्निंग एवरीथिंग द डेटाबेस टेक्नोलॉजी, आफ्टर लर्निंग डेटाबेस टेक्नोलॉजी, द स्टूडेंट्स आस्क द क्वेश्चन, okay, we have learned database, we have learned SQL, we have learned PLSQL, we have also learned NoSQL, but where we are going to use it, where you are going to use it, उसका यूज केस क्या होता है? जैसे मैंने पहले ही बोला था, लाइक आपको सी 90% स्टूडेंट को सी आता होगा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, so let us, okay, Yes, sir. Yes, sir. so let us assume 90% of the students is knowing C. Now tell me, चालू कर, कैमरा चालू कर. Can you see the board? Hello? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Just a minute. Yes. Now yes. Yes, sir. अभी दिख रहा है. दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay, now just tell me. ठीक है, most of the students they are knowing C application, C programming language. Okay, so now let us check. This is one program I have written. This is one program I have written. So just keep any name, whatever name you feel in, ठीक है, in your mind. ठीक है, whatever name you feel in your mind, you just keep that name. उसका extension हमने .c किया. ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ तो प्रोग्राम लिखा है. ये प्रोग्राम करता क्या है? It is accepting few information, that is, it is asking for the name. वो यूजर के पास से नेम लेता है. ठीक है, फिर वो क्या करता है? यूजर के पास से दो वैल्यूज लेता है, जैसे पैन कार्ड. एंड पासपोर्ट. ठीक है, ये तीन डिटेल्स इट इज टेकिंग फ्रॉम द यूजर. सो व्हाट यूजर इज गोइंग टू डू, he will be executing this program and it is going to prompt us, enter the username or enter the name, enter the PAN card, enter the password. After entering all these three values, what is going to happen? ये तीनों तीन values देने के बाद what will happen? Validation. You will see the output. It will display Validation. output. ठीक है, वैलिडेशन कर दिया. सो वैलिडेशन तो कैसे होगा? वैलिडेशन कैसे होगा?
मैच ये विद एग्जिस्टिंग डेटाबेस में डाटाबेस। चला जाएगा और उसके बाद में जो भी हमने वहां पर प्रोग्राम सेट किया उसमें इनपुट आ जाएगा इसका। बराबर। सो होता क्या है, इनपुट लेने के बाद वॉट एवर स्टेटमेंट्स आई हैव रिटन, वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, एंड एज सुन एज माय प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप्स, as soon as my this thing program execution halts, what it does, whatever things we have inserted, that is the name, the PAN number and the passport number and the remaining details, everything will be get lost. क्यों हट जाएगा, क्यों रिमूव हो जाएगा? बिकॉज वॉट एवर थिंग्स यू हैव गिवन, वो क्या करता है, मेमोरी के अंदर स्टोर करता है ना। बिकॉज कैसे होता है, अगर मेरे को नेम लेना है तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी क्रिएटिंग अ वेरिएबल। हर एक के लिए मैं वेरिएबल बनाऊंगा, और वेरिएबल का लाइफ कितना रहता है, टिल माय प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन। ठीक है, फिर टिल माय प्रोग्राम इज इन द एग्जीक्यूशन मोड, एज सून एज माय प्रोग्राम स्टॉप्स, whatever things are there in the variables will be get destroyed. But now let us think, whatever value we have given here, those values are to be stored permanently. Those values are to be stored permanently. So कैसे store करोगे? Whatever answer, as I say, whatever answer you know, you just tell me. ये डेटा जो मैंने एक्सेप्ट किया यूजर के वास्ते, उसको मेरे को परमानेंट स्टोर करना है, तो कैसे करोगे? सर डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। डेटाबेस तो हमने सीखे नहीं है ना, मैंने दैट इज वाई स्टार्टिंग में मैंने क्या पूछा था कि आपको, ठीक है, 90% ऑफ द स्टूडेंट इज नोइंग ओनली सी। सर फाइल में स्टोर क्या फाइल करोगे? बना के फाइल बना के स्टोर फाइल बनाओगे ना। सेकेंडरी स्टोरेज में सर, व्हाट? सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करेंगे डेटा। सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कैसे करेंगे? कैन आई डायरेक्टली स्टोर? नो सर, वी फर्स्ट क्रिएट वेरिएबल फॉर दैट डेटा। योर वॉइस इज गेटिंग इकोड, पता नहीं चल रहा है। Firstly, sir, it locate a memory location with the name, and under that location it store data, the PAN number and passport data. Okay, so what? Sir, we can use structure. But still structure के अंदर भी store करोगे तो structure का data will be get destroyed ना, as soon as the program execution stops. ठीक है, so if you create a variable, if you create a array, if you create the structures, everything will be there in the memory. As soon as program stops, everything lost. इसके लिए तुम लोग, जैसे पता नहीं किसने तो आंसर किया था, क्या करेंगे हम लोग, एक फाइल बनाएंगे। मीन्स व्हाट, आई विल बी राइटिंग सर्टेन लॉजिक विच इज रिलेटेड टू फाइल हैंडलिंग। सो सी के अंदर हम लोग फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम लिख सकते हैं क्या? यस, वी कैन राइट इट। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम तुम लोग लिख सकते हो। नाउ व्हाई देयर इज अ नेसेसरी फॉर राइटिंग a file handling program? Because whatever data I insert, that data permanently I want to store somewhere, unless and until I don't delete manually from that place. मेरे को permanent store करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, एक मैं प्रोग्राम लिखूंगा फाइल हैंडलिंग रिलेटेड। So I will be opening the file, I will be creating the file, and I will be writing whatever contents I have taken in the variable, those contents I will be writing in the file. सो ये एक लाइन बन गया। वैसे मैंने प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट किया, वापस नए नाम लिए, और फिर मैं क्या करूंगा, ये फाइल के अंदर नीचे में अपेंड करते रहूंगा। ये फाइल के अंदर ही मैं अपेंड करते रहूंगा। सो जितना भी डेटा मैंने यहाँ पे स्टोर किया है, whenever I require, I can just open this file and I can see the contents. Okay, what are the things written in the file which I have passed through my C programming language. ऐसे मैं कर सकता हूँ। So basically हमको, मैंने क्या बोला कि we are not going to learn, we are not learning C. What we are learning, we are going to learn database. And database means what? The place where my data is getting stored permanently. So database doesn't mean कि we are, if you are using MySQL server or Oracle, only in that
applications the data can be stored. ऐसे नहीं होता है. कैसे होता है कि the place where the data can be stored, that can be anything. It can be even a file. It can be a file with the extension txt. फाइल के अंदर तुम लोग क्या करते हो, फाइल्स बनाते हो. उसका मतलब क्या है, वहां पे आप नोट्स बनाते हो और उसको क्या करते हो, कंट्रोल एस से सेव करते हैं. डॉक्यूमेंट फाइल्स बनाते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल का फाइल बनाते हो. वहां पे क्या करते हो, ओपन अ शीट, यू स्टार्ट इंसर्टिंग द डेटा एंड आफ्टर दैट व्हाट, यू जस्ट से कंट्रोल एस. वो क्या करते हैं, अ डॉक फाइल, एन एक्सेल फाइल, अ टेक्स्ट फाइल आर गेटिंग क्रिएटेड. Files are getting created and these files are getting stored permanently either in C drive or any of the drives. Wherever you have decided, वहां पे वो सेव होता है. Okay, so हमको बेसिकली फोकस किस पे रखना है, हमको बेसिकली फोकस रखना है डेटाबेस पे. ठीक है. सो फाइल में जब डेटा स्टोर, whenever you are storing the contents in the file, ठीक है, as I said, the contents can be stored, but whenever you are storing the contents in the file, there are certain limitations when you are writing some programs. ठीक है, there are certain limitations when you are writing some programs on the files where my data is stored. ठीक है, फाइल के अंदर अगर मेरा डेटा स्टोर है तो मेरे को कहीं पे तो कोई तो प्रोग्रामिंग, जब मैं प्रोग्राम्स लिखूंगा, इन सर्टन प्रोग्राम्स I will be facing the problems. What are those problems? Unless and until I don't understand what are the advantages and disadvantages, how the file works, आपको पता ही नहीं चलेगा. अब भी तो हमको क्या पर्पस देखना है कि भाई अगर मेरे को डेटा स्टोर करना है तो वी कैन मेक द यूज ऑफ अ फाइल और वी कैन मेक द यूज ऑफ अ डेटाबेस. ठीक है, अभी जैसे मैंने पहले बोला था कि भाई आफ्टर लर्निंग एवरीथिंग, after learning database till MongoDB and everything, student is asking me, okay, we have learned this thing, but what is the use case? So this is the use case. What? Like suppose if you have created one application which is getting the information of any book, ticket booking system, जैसे रेलवेज का है, कुछ भी है, कोई भी बुकिंग सिस्टम है. बुकिंग सिस्टम के अंदर मेरे को एक फॉर्म जनरेटेड है. ये फॉर्म के अंदर आई एम जस्ट पासिंग द डेटा, आई एम गिविंग द डेटा एंड दिस डेटा वी वांट टू स्टोर परमानेंटली समवेयर इन द फाइल, somewhere in the file or somewhere in the database, somewhere in the database. ठीक है, so that is the use case. So देखते हैं, just let us see. काय करो, कैमरा ऑफ. I'm just sharing my screen, just 2 minutes. ठीक है, so let us understand this. We need a database to be, we need a database because they organize the data in a manner, organize करने के लिए, in a manner which allows us to store, query, sort and manipulate the data in various ways. In various ways. अभी सोचो कि तुमने अगर कुछ डेटा, let us forget, तुमने 50 स्टूडेंट्स के नाम, ठीक है, 50 स्टूडेंट के नाम अपने नोटपैड के फाइल के अंदर आपने स्टोर किया है. And same 50 students name you have stored in Excel sheet. And if I tell, okay, this is a text file, whatever names are there, students name are there, arrange that student's name according to their first name, starting with A to Z. Then how you are going to do it? कैसे करोगे? नोटपैड में मैन्युअली करना पड़ेगा. नोटपैड में मैन्युअली करना पड़ेगा. ठीक है, अगर मैन्युअली नहीं करना है तो क्या करोगे? सोच के बताओ. अगर मैन्युअली नहीं करना है तो क्या करोगे? सॉर्ट करेंगे सर डेटाबेस.
क्या करेंगे? सॉर्ट करेंगे Excel में। क्या करेंगे? सॉर्ट सॉर्ट करेंगे। लेकिन सॉर्ट कैसे करोगे? एक्सेल में फंक्शंस रहते हैं उसके थ्रू। हाँ, एक्सेल में फंक्शंस रहते हैं उसके थ्रू करते नहीं हैं। अपन एक्सेल की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, एक्सेल की बात ही नहीं कर रहे हैं ना। सर एल्गोरिदम यूज करेंगे, सॉर्टिंग एल्गोरिदम। मेरे पास तो एक नोटपैड का फाइल है, ठीक है, नोटपैड के फाइल के अंदर का जो डेटा है उसको मेरे को सॉर्टिंग करना है। तो कैसे करोगे? पॉसिबल नहीं है ना, अनलेस एंड अनटिल आई डोंट राइट अ प्रोग्राम। पॉसिबल है क्या? जब तक डेटाबेस टेक्निक्स नहीं आती तब तक तो मैनुअली करना पड़ेगा। बराबर है। सो वो लिमिटेशन हो गया। अभी सोचो, अभी इसको कंपैरिजन करते, मेरा एक 50 स्टूडेंट का डेटा नोटपैड में, 50 स्टूडेंट का सेम 50 स्टूडेंट का डेटा मेरा एक्सेल में। अगर मैंने बोला कि अभी मेरे नोटपैड का जो डेटा है उसका मेरे को नेम को सॉर्टिंग करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आइदर मैन्युअली करना पड़ेगा, वन बाय वन आपको एक एक नाम देखना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गोइंग टू सॉर्ट द डेटा। और अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, आई कैन कनेक्ट माय फाइल, to the C programming language, what I can do, I can write a sorting algorithm. ठीक है, so one by one I will be picking the data from the notepad file. After picking, I will be sorting everything, and after sorting I will be putting in some another file or in maybe in the same file. But उसके लिए मेरे को लॉजिक लिखना पड़ेगा। अभी सोचो द सेम थिंग, अगर सेम थिंग इसके अंदर एक्सेल के अंदर करना है, तो एक्सेल के अंदर तो बिल्ट इन एक फंक्शन दिया हुआ है। एक्सेल के अंदर तो बिल्ट इन फंक्शन दिया है, वो क्या करो तुम लोग, हाईलाइट करो जितना भी नाम है, 50 names, you just select that 50 names, just highlight it and you click on that button. But as soon as you are clicking on that button, what is happening? The data is getting sorted. Either it is alphabetically from A to Z or from Z to A. But behind that click, some logic has been written, no? माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ तो लॉजिक लिखा है कि भाई ये बटन करने से हमको डेटा सॉर्टेड दिखता है, वो तो मेरा यूआई बन गया। बट वो बटन के पीछे जो मेरा प्रोसेस कर रहा है उसके लिए कुछ तो लॉजिक लिखा है, एंड दैट लॉजिक व्हाट इट डज, some sorting algorithm it is applying, and according to that the data is getting sorted, which is not possible in directly in notepad. तो अभी ये देखो कि अगर मेरे को इस तरह से कुछ प्रोसेसेस करना है, जैसे मेरे को डेटा को स्टोर करना है, वो तो नोटपैड में भी कर सकते हो, बट क्वेरी करना है। सपोज इफ यू वांट टू शो ओनली द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द पर्सन्स लिविंग इन पुणे सिटी, तो ये तो मेरे को क्वेरी देना है, कंडीशनल डेटा मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए भी मेरे को प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा, आइदर इन सी, C++ और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायरेक्टली नोटपैड में तो क्या सिलेक्टेड डेटा नहीं आ सकता, बिकॉज अगर सिलेक्टेड डेटा मेरे को एक्सेस करना है तो आई विल बी ओपनिंग अ नोटपैड फाइल, एंड एज सुन एज आई ओपन अ नोटपैड फाइल एवरीथिंग आई एम एबल टू सी। ठीक है, सो अभी उसको हमको देखते हैं, आगे जाके उसको देखते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेज। अभी इतना याद रखो कि भाई जब हम लोग डेटाबेस यूज करते हैं, वो डेटाबेस करता है कि इट ऑर्गेनाइज द डेटा इन द मैनर which allows us to store query, sort and manipulate the data in various ways. Database allows us to do all these things. Database हमको ऐसे करने देता है। Many companies collect the data from different resources, जैसे weather data, geographical data, financial data, scientific data, transport data, cultural data. यहां से तुम लोग डेटा का एक्सेस कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट डेटा, ये जैसे ओला, उबर क्या करता है, उनका ऐप जब ओपन करते हैं तो हमको दिखाता है कि भाई विच इज माय नियरेस्ट, हमारे घर के आजू बाजू नियरेस्ट कार कौन सा है, वो जीपीएस ये वो सब लगा के ट्रांसपोर्ट का डेटा। या तो फिर हम लोग गूगल मैप्स पे करते हो, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड इफ देयर इज ट्रैफिक समवेयर or traffic jam somewhere, it shows me highlighted red color
So what they are doing, they are collecting the information from the places, geographical data हो सकता है, weather data. So कुछ भी data हो सकता है, उसको हमको store करके process करना है, and that is the use case of a database. Okay, that is the use of a database. Now, as soon as I go to the next screen, ठीक है, what we are going to learn? We are going to learn some technical keywords, technical words, some reserved words. These reserved words in the future, I will be naming it. I will be calling it. So as soon as I call something, some technical words, you should not get confused कि okay, इसका meaning है क्या? Because हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, आगे future में हम लोग को जो करना है उसका preparation कर रहे हैं. So some technical words I will be uttering. So you should know what technical words I am going to say. And these two technical words, reserved words, आप याद रखो. At the time of lecture, I will be uttering a word, relation, or I will be uttering a word, relationship. Now, whenever I say relation, you should not get confused. क्या relation का मतलब है क्या? या तो फिर relationship का मतलब है क्या? Because वो हम लोग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये वर्ड्स का मीनिंग बता देने वाला हूं. दैट्स व्हाई. ओके, सो लेट अस मूव ऑन. रिलेशन, ठीक है. इन डेटाबेस, a relation represents a table or an entity that contains attribute. Now these technical words you have to keep in mind. In the lectures, I may utter a word called table. If I say a entity, if I say a relation, everything is same. वो सब सेम है. ठीक है. जब मैं एंटिटी बोलूंगा उसका मतलब उसका हम लोग वी आर रिफरिंग टू अ टेबल. सो टेबल आपको पता है कैसे बनना है, हाउ इट इज टू बी क्रिएटेड. लेटर ऑन विल जस्ट सी. राइट नाउ यू जस्ट कीप इन माइंड दिस टर्म्स relation, table and entity are one and the same. That contains an attribute. ये attribute word भी याद रखो, because sometimes I will be using a word attribute, sometimes I will be using a word field, sometimes I will be using a word column. It is one and the same. ठीक है. So ये technical words को याद रखो. Relationship. In database, a relationship is that how two different entities or how two entities are connected. Now you know the meaning of an entity. यानी क्या कि मेरे पास अगर कोई दो टेबल हैं तो between that two tables, how the connection should be get established. How the connection should be get established. So that connection will be always considered as a relationship. What is the relationship? What is the relationship between table A and table B? Now again there are different types of relationship. So अभी हम लोग types of relationship नहीं देख रहे हैं. अभी हम लोग इतना देख रहे हैं कि भाई relationship का मतलब क्या होता है. ठीक है. So इतना याद रखो. In database, relationship is that how two entities are connected to each other. That is what kind of relation type they hold between them. दो टेबल के बीच में जो रिलेशन टाइप है वो क्या है वो आगे जाके देखेंगे. Then the next words, primary and foreign key. You must have heard. ठीक है. You must have heard the meaning. You must have heard the name primary key, foreign key. As I said, we are not learning primary key and foreign key. We are just learning what is a relation. We are just learning the technical words. Okay. Now, primary key and foreign key is used to specify this relationship. As I said, everything is connected with one another. Relationship का मतलब क्या है कि दो tables के बीच में, दो entities के बीच में हमको connection करना है. Entities क्या है उसको table बोलते हैं. Entities are considered as a table. So अगर if I have got two table 1 and table 2, and if I want to create a relation between table 1 and table 2, what I'll be using? I will be using the term, I will be using the constraint which is a primary key and a foreign key. Without primary key and a foreign key, the relationship between two entities cannot be established. नहीं हो सकता. ठीक है.
तो ये स्टूडेंट्स आगे कंफ्यूज होते हैं कि भाई रिलेशनशिप प्राइमरी की फॉरेन की सीख लेते हैं, ठीक है, प्राइमरी की फॉरेन की कैसे दो टेबल के बीच में कनेक्शन करना है, बिकॉज दैट इज व्हाट, दैट इज टेक्निकल थिंग, कमांड्स देने पड़ता है। कमांड्स देने से तुमको प्राइमरी की फॉरेन की दे सकते हैं, बट प्राइमरी की फॉरेन की से होता क्या है, स्टूडेंट फॉरगेट, स्टूडेंट फॉरगेट। तो होता क्या है, इट इज क्रिएटिंग अ रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, why it is required, that is also very important. So as soon as we come to this portion in the future sessions, you will be able to understand. Now whenever we say a foreign key, abhi foreign key ko, as I said, sometimes I will be calling, remember foreign key are also known as reference or a referential key, ठीक है, फॉरेन की को रेफरेंस या तो रेफरेंशियल की भी बोलते हैं। तो अगर मैं बोलते बोलते लेक्चर के अंदर रेफरेंस बोल दिया, या तो फिर मैंने रेफरेंशियल की क्या है ऐसा बोल दिया, व्हाट इज द रेफरेंशियल की ऑफ दिस टेबल, इफ आई आस्क यू, मींस व्हाट, आई एम आस्किंग यू on that particular table which is the attribute on which a foreign key is given, because see, primary key and foreign key are given only on the columns. आगे जाके हमको देखने वैसे these things right now you may feel it is getting confused, confusion हो रहा है कि भाई किस तरह से देना है, क्या बोलना है, confusion होगा, ठीक है। what I am trying to tell you right now, we are just preparing the contents for the future lectures. ये हमको सब करके देखना है, मैन्युअल फिजिकली डेमोन्स्ट्रेशन देके हम लोग आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये द टर्म को याद रखो, रेफरेंस, रेफरेंशियल की, उसका मतलब क्या है, अ फॉरेन की। रिलेशनशिप का मतलब क्या है, कनेक्शन बिटवीन टू टेबल्स। रिलेशन का मतलब क्या है, टेबल या तो एंटिटी, इतना याद रखो, ठीक है। सो नाउ लेट अस गो टू द next slide. Note, just read the note. Table, a physical instance of a relation in the database schema. Physical instance, जब हम लोग एक्चुअली कमांड देने के बाद जो रिलेशन बनाते हैं वो फिजिकली जब क्रिएट होता है उसको टेबल बोलते हैं। और जो फिजिकली क्रिएटेड नहीं है, विच इज ऑन द पेपर, जैसे इफ यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम, ठीक है, व्हेन यू स्टार्टेड learning a programming language, before you write the program, what someone should have taught you, सबसे पहले आपको क्या सिखाया होगा, फ्लो डायग्राम सिखाया होगा ना। यस सर। फ्लो डायग्राम्स क्यों बनाते हैं, इट डिस्क्राइब्स हाउ माय लॉजिक इज गोइंग टू परफॉर्म, हाउ माय, ठीक है, हाउ माय प्रोग्राम इज गोइंग टू एग्जीक्यूट, कहां से कहां मेरा फ्लो जाने वाला है। सो फ्लो डायग्राम्स बनाते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो डायग्राम यू आर राइटिंग द प्रोग्राम, उसको तुम लोग क्या करते हो, प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हो। एग्जैक्टली इन द सिमिलर मैनर, whenever you want to design any table, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको पेपर वर्क करना है। पेपर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेपर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ समथिंग हैपेंस, इफ योर स्ट्रक्चर इज नॉट प्रॉपर, ठीक है, इफ योर स्ट्रक्चर, दैट इज इफ योर टेबल इज नॉट प्रॉपरली क्रिएटेड in the paper, you can just rub and rectify that changes, आप लोग उसको changes कर सकते हो। बट अगर आपने उसको फिजिकल टेबल में कन्वर्ट किया तो इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट टू डू द चेंजेस इन द फिजिकल टेबल, ठीक है। सो जब भी तुम लोग लॉजिकल कंस्ट्रक्ट बनाते हो, लॉजिकल कंस्ट्रक्ट पेपर पे जब बनाते हो उसको हम लोग रिलेशन बोलते हैं, और जब उसको हम लोग फिजिकली कमांड देके जब हम लोग उसको लॉजिकली स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसको फिजिकली टेबल बोलते हैं, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द फाइल सिस्टम्स एंड अ डेटाबेस सिस्टम, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फाइल सिस्टम होता है क्या है। सो बोर्ड पे मैंने बताया था कि भी अगर मेरा सी का प्रोग्राम है, सी का डेटा मेरे को कहीं पे तो स्टोर करना है, तो आई कैन मेक द यूज ऑफ अ फाइल सिस्टम वेयर आई कैन स्टोर द डेटा। बट एज आई सेड, इफ यू आर मेकिंग द यूज ऑफ अ फाइल सिस्टम, there will be certain limitations, and because of that, because of the limitations of the file system,
ठीक है, nowadays we are working, nowadays we are using database that is a database DBMS. We are making the use of any of the database which comes under RDBMS, जैसे MySQL, MS SQL, Oracle, वो हम लोग यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? उसका रीजन स्टार्ट करने से पहले उसका फाइल सिस्टम्स क्या होता है उसको देख लेते हैं. सो जस्ट सी, फाइल सिस्टम इज द ट्रेडिशनल वे टू कीप योर डेटा ऑर्गेनाइज्ड. ट्रेडिशनल हो गया, बट एज आई सेड, इन द ट्रेडिशनल मेथड देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस. अगर मेरे को सॉर्टिंग करना है तो क्या प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. कुछ भी अगर मेरे को प्रोसेस करना है ऑन द डेटा विच इज स्टोर्ड इन द फाइल, मेरे को प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. विदाउट दैट इट इज not possible to do certain things. So now let us check. Now I will be showing you one screen. एक डिजाइन बताता हूं. ये डिजाइन को तुम लोग एनालाइज करो. ये डिजाइन को तुम एनालाइज करो and tell me what is happening if I store the data in file systems, and that is considered as a file anomalies. फाइल के अंदर स्टोर किया हुआ डेटा का प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको फाइल एनोमलीज बोलते हैं. अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिया है कि देयर इज अ स्ट्रक्चर सी के अंदर. जैसे मैंने सी बोर्ड पे एग्जांपल लिया था, सी का एक फाइल होता है, सी का एक प्रोग्राम है, उसको क्या उसका डेटा मेरे को फाइल में स्टोर करना है. तो समवन हैड टोल्ड मी कि यू कैन राइट द कंटेंट्स इन द स्ट्रक्चर. सो हियर आई हैव क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर. सो दीस आर द टू डिफरेंट सिंटेक्स ऑफ अ स्ट्रक्चर. एनी वन थिंग कैन बी गिवन. ये मेरा स्ट्रक्चर है. ये स्ट्रक्चर क्या करता है? 1000 एम्प्लॉयज का डेटा यूजर के पास से फेच करता है. दिस इज माय सी प्रोग्राम. सी प्रोग्राम के अंदर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है विच इज एक्सेप्टिंग द डिटेल्स ऑफ 1000 एम्प्लॉयज. एंड आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज, दोज वैल्यूज आई हैव स्टोर्ड in the original file. This is my original file, and the file name is employee.txt, which is getting stored into the C drive. Okay, now what you have to do, this is the original file. Now you just analyze the remaining content. ये जो remaining जो columns हैं उसको analyze करो and tell me what is happening. So duplicate entries. ठीक है, अभी यहाँ पे फर्स्ट जो है, अगर मैं ये कॉलम को कंसीडर करता हूं तो यहाँ पे मेरे को क्या नोटिस होता है? टेल मी. लेट अस गो लाइन बाय लाइन, सिक्वेंशियली जाते हैं. अगर ये पहला कंसीडर मैं करता हूं कॉलम फाइल का कंटेंट, तो डेटा अपडेट किया है. हाँ, क्या हो रहा है? डेटा अपडेट किया गया. डेटा स्टोर रिपीटेडली. डेटा क्या हो रहा है? रिपीटेडली स्टोर हो रहा है. स्टोर रिपीटेडली. यहाँ पे तो डेटा कहीं पे भी रिपीटेड नहीं है ना. वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग. इसके बारे में बात कर रहे हैं जो मैंने एरर किया है वो. डेटा अपडेट मोर देन 1000 एंट्रीज. हाँ, मोर देन 1000 एंट्रीज. अपडेट हो रहा है सर. डेटा अपडेट क्या है? मोर देन 1000 डेटा. ठीक है. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखो, सोचो. ठीक है, 1000 एम्प्लॉय का डेटा मैंने लिया, एम्प्लॉय टेबल के अंदर स्टोर किया. मीन्स व्हाट? इन माय ऑर्गेनाइजेशन देयर आर ओनली 1000 एम्प्लॉयज, एंड फॉर ऑल दैट 1000 एम्प्लॉयज I have stored the details in the employee.txt file, which is in the C drive, local computer. Now what happens if some another person comes and he does some mischief? What mischief? Because see, as you see, the file extension is text file. This text file can be opened using any editor. तुम उसको नोटपैड में ओपन करो, उसको नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करो, कोई भी एडिटर यूज करके उसको ओपन कर सकते हैं. तो पर्सन ने क्या किया? एक पर्सन ने क्या किया? मिस्चिफ किया. क्या मिस्चिफ किया कि ये जो ओरिजिनल फाइल था मेरा, ओरिजिनल फाइल के अंदर मैंने और 1000 एम्प्लॉयज का डिटेल मैंने भर दिया. एंड दिस रिमेनिंग 1000 एम्प्लॉयज आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी. सो माय कंपनी एम्प्लॉय आर ओनली 1000. बट इफ आई ट्राई टू रीड employee.txt file, assuming that
assuming that in this file only the name of the employees which are working in the company are present, तो गलत हो जाएगा बिकॉज मेरे कंपनी में 1000 है और यहाँ से मेरे को 2000 एम्प्लॉयज का डेटा दिख रहा है, फेच हो रहा है, तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? बिकॉज ये मैंने टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर किया है इन द सी ड्राइव। सो एनीवन कैन इजीली ओपन द कंटेंट, एनीवन कैन इजीली ओपन दिस फाइल एंड ही कैन ऐड। यहाँ पे एडिशन हो रहा है ना, डेटा नया ऐड हो रहा है, यहाँ पे नया डेटा ऐड हो रहा है, अननेसेसरी डेटा ऐड हो रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी सेकेंड कॉलम में देखते हैं। सेम ओरिजिनल फाइल ये मेरा है, ये मेरा ओपन करने के बाद ये मेरे को कंटेंट दिख रहा है। अब इसको एनालाइज करो एंड टेल मी व्हाट इज हैपनिंग। इसमें डेटा रिपीट हो रहा है सर। इसमें डेटा रिपीट, यहाँ पे डेटा रिपीट हो रहा है, बराबर? यस सर। Unnecessary, Yes, the sir. data is getting repeated. Means what? The redundancy of the data is happening. And why we make use of a database? So that the redundant data should not get stored. Duplication of the data should not get stored. तुम लोग जब मोबाइल के अंदर फोन नंबर जब स्टोर करते हो, and if that phone number is already present, तो स्टोर होता है क्या? नो सर। नहीं होता है ना, बिकॉज एल्गोरिदम वो लोगों ने जब वो एप्लीकेशन बनाया है, कॉन्टैक्ट्स का जो एप्लीकेशन बनाया है वैसे ही बनाया है कि अगर मैं फोन नंबर डालता है, इफ दैट फोन नंबर इज ऑलरेडी प्रेजेंट, इट इज गोइंग टू प्रॉम्प्ट मी, इट इज गोइंग टू शो मी along with their names. Why? Because internally they have written some mechanism. अभी सोचो सेम थिंग यहाँ पे हो रहा है क्या? I mean, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि as this is a notepad file, as it is a text file, you can simply open the notepad file and you can just copy and paste the content. यहाँ से उसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर दिया, तो डेटा डुप्लीकेशन हो गया। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन। जैसे डेटा ऐड होता है, अनवांटेड डेटा ऐड होता है, इन द सिमिलर केसेस, इन द सिमिलर केस, इन द सेकेंड पोर्शन क्या होता है? डेटा डुप्लीकेट होता है, डेटा डुप्लीकेट हो रहा है। ये प्रॉब्लम्स होते हैं इफ आई स्टोर द कंटेंट्स इन द फाइल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन द थर्ड फाइल। सीक्वेंस सीक्वेंस गलत हो गया सर। तरीके से प्रिंट हो रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। सर डाटा डबल हो गए। एक तो यहाँ पे डेटा रिडंडेंट हो रहा है, बराबर कि नहीं? जो यहाँ पे मेरा था, यहाँ पे जो डेटा था वही मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया है। और क्या हो रहा है? सीक्वेंशियल सीक्वेंस फॉर्मेट गलत होगा, लास्ट फॉर्मेट में जैसे गलत तरीके से फॉर्मेट लिखा हुआ है। सीक्वेंस गलत रॉन्ग स्ट्रक्चर्ड डेटा। एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर स्ट्रक्चर में लिखा है। अभी यहाँ पे देखो, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ वहां पे देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अभी देखो, द फर्स्ट कॉलम वेयर इफ यू सी इन द स्ट्रक्चर, इफ यू सी इन द स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय नंबर सर। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर है, ठीक है। अभी एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे मैंने, ओके, अभी तुम लोग ऐसे बोलोगे कि यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय नंबर मैंने कैरेक्टर दिया है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे तो ऐसे पंकज यहाँ पे स्टोर करने से चल सकता है। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर ये जो है कैर की जगह पे आई जस्ट से इंट, और ये अगर इंट है तो ये मेरे को हटाना पड़ेगा, बराबर? यस और नो? यस सर। यस, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे मैं डेटा टाइप इंट करता हूँ, और फिर ये मेरे को एरे हटाना पड़ेगा। इसको हम लोग रन करते हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। It will give an error while parsing. It is going to give an error. Why?
ठीक है, एट द टाइम ऑफ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्टोरिंग जब डेटा इंसर्ट किया था तब मेरा ओरिजिनल डेटा तो ये था ना, सो अप्रोप्रिएटली प्रॉपरली द डेटा वाज गॉट स्टोर्ड कि भाई यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय नंबर इंटीजर है, सो अगर मैं पहला कॉलम देखता हूँ, एवरीवन इज इन दैट कॉलम, everything is of a number type, second is of a character employee name, so हर जगह पे मेरे को नेम दिख रहा है, कैरेक्टर्स। थर्ड टाइप है इंटीजर, सैलरी, सैलरी के कॉलम पे मेरे को सब सैलरी दिख रहा है। बट एज आई सेड दिस इज अ नोटपैड फाइल, समवन कैन डू मिसशिफ। क्या मिसशिफ किया उसने, क्या किया, ये फाइल को ओपन किया और उसने क्या किया, जहां पे रोल नंबर था या तो एम्प्लॉय नंबर था वहां पे उसने क्या किया, नेम को पेस्ट कर दिया, और जहां पे नेम था वहां पे उसने एम्प्लॉय नंबर को पेस्ट कर दिया। अभी जब इसका जब रिपोर्ट निकलेगा, बिकॉज इसके लिए मेरे को रिपोर्ट बनाने के लिए मेरे को प्रोग्राम ही लिखना पड़ेगा ना। इफ आई राइट अ प्रोग्राम, व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट द टाइम ऑफ रीडिंग ऑफ दिस रिकॉर्ड, at the time of reading of this record, what it is going to do, employee number will be read as a character, and as it is trying to read employee number as a character at that particular place, it is going to raise an error, because for storing employee number you have taken the data type as integer, and an integer data type you cannot store characters, वहां पे तुरंत फेल हो जाएगा। बट ये फेल किसने करवाया, ये फेल किसने करवाया, जिसने ये फाइल को ओपन करके, द पर्सन हु हैज ओपन द फाइल एंड मैन्युअली डन द चेंजेस, यहाँ पे मैन्युअली किया है। सो अगेन दिस इज द लिमिटेशन, दैट इज माय एनोमली, ठीक है, दैट इज द एनोमली, फाइल प्रॉब्लम्स। नाउ अभी देखो लास्ट वाले बॉक्स में देखो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे कंटेंट देखते हैं, व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज माय ओरिजिनल डेटा। Now tell me what is happening here. Sir, only 500 entries. Only 500. So let us make it incomplete data. Huh? Data loss. Data loss. Suppose यहाँ पे देखो, ऐसे में कंसिडर करता हूँ, ये जो एम्प्लॉय नंबर है वो 750 है और उसका बाकी का डिटेल्स, ठीक है, बाकी का डिटेल्स। अभी सोचो व्हाट इज हैपनिंग, माय ओरिजिनल फाइल इज हैविंग 1000 records, so I know my company is having 1000 employees, but when I tried to read the same file, I got the information only of 750 employees, so remaining employees का detail यहाँ से गायब है। So someone has done the mischief. What he has done, he has opened this file and he has deleted some of the records. उसने क्या किया, कोई तो records को remove कर दिया, and because of that the contents of the original file is getting mismatched with the contents of this file. In the similar manner, the contents of the original file is getting mismatched with the contents of this file, along with this file as well as this file, mismatch हो रहा है। ये प्रॉब्लम्स फाइल सिस्टम्स में होते थे, ये प्रॉब्लम्स फाइल सिस्टम में होते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट अस मूव अहेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ रीड दिस, ठीक है, एनालाइज दिस, अगेन द सेम प्रोग्राम, वी हैव गॉट एम्प्लॉय टेबल, employee.txt फाइल, ठीक है, जो मैंने ओरिजिनल फाइल आपको बताया था, employee.txt फाइल है मेरे पास। अभी यहाँ पे द नंबर ऑफ डेटा इज मोर, दिस इज माय ओरिजिनल कंटेंट। नाउ एनालाइज दिस थिंग एंड टेल मी व्हाट इज हैपनिंग। एनालाइज दिस थिंग एंड टेल मी व्हाट इज हैपनिंग। फाइल एट्रीब्यूट लेते हैं, फाइल एट्रीब्यूट, कौन से फाइल एट्रीब्यूट्स लेके आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं अभी? फाइल नेम, टाइप और लोकेशन। सबने लिख लिया ना, ठीक है, लिख के रखो।
because I will be going on the board. कैमरा चालू कर. Can you see the screen, whiteboard? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. अभी सोचो, ठीक है, मेरा कोई तो कंटेंट है, ठीक है, मेरे पास कोई तो फाइल है, सो फाइल 1, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय के डिटेल स्टोर है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, ठीक है. आई एम राइटिंग वन सी प्रोग्राम और आई एम राइटिंग a program in any of the technology, either in C, Java, .NET, anywhere, where I have made the use of file handle. ठीक है, फाइल के अंदर जो डेटा स्टोर हुआ है, ये डेटा को हम लोग रीड कर रहे हैं, ठीक है. For writing that program, I have taken any of the technology. I have made the use of C, either C++, या तो .NET, या तो फिर Java, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिया है, ठीक है. तो मैं क्या कर रहा हूं, फाइल को रीड कर रहा हूं, फाइल को रीड कर रहा हूं, ठीक है. कौन सा फाइल रीड कर रहा हूं, ठीक है. सो इसके ऊपर एंड नीचे, ठीक है, सम एल्गोरिदम आई हैव रिटर्न एट दिस प्लेस, ठीक है. एट दिस प्लेस व्हाट आई एम डूइंग, I am opening the file, ठीक है, I am opening the file, and after opening the file I want to read the contents from the file, ठीक है. So read नहीं करते, डायरेक्टली ओपन करते हैं, opening a file, because if I want to read something, first I have to open the file. Which file? f1.txt, where my contents are present. अभी सोचो, पहला ऑप्शन मैंने एट्रीब्यूट के अंदर क्या दिया था, फाइल नेम, फाइल नेम, फाइल नेम था. दूसरा क्या था, टाइप, एंड देन लोकेशन. ठीक है, फाइल नेम, फाइल टाइप एंड लोकेशन. ओके, सो नाउ लेट अस हैव दिस फाइल 1.txt इज लोकेटेड इनटू C ड्राइव, ठीक है. फाइल लोकेशन इज C ड्राइव, फाइल नेम इज f1 and the file type is text file. It is a .text file. Okay, so तीनों तीन आ गया, लोकेशन आ गया, फाइल नेम आ गया और फाइल टाइप आ गया. अभी सोचो क्या किया, मैंने फाइल को ओपन किया, ओपन करने के बाद मैं क्या रीड करता हूं, मैं ये फाइल को रीड करता हूं, ठीक है. आई एम गोइंग टू ओपन द फाइल, which file, f1.txt, but where is that file? I have not written that, so I'll just write open the file from C drive, open the file from the C drive, the file name is f1 and the extension is text. File 1 is f1 and the file extension is text. कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकेशन, फाइल नेम, एक्सटेंशन उसको सही मिल गया, उसको ठीक ठाक मिल गया. अभी सोचो, ये तो मेरा C ड्राइव के अंदर फाइल है. अभी some person who wants to do some mischief, what he has done, he has changed the file name to f1 to a1. f1 की जगह पे उसने a1 कर दिया.
F1 की जगह पे उसने A1 कर दिया। मैंने प्रोग्राम को रन किया। जब मैंने प्रोग्राम रन किया, मेरा प्रोग्राम स्टेटमेंट कंट्रोल इधर आएगा। As soon as the control comes here, what it is going to do? It is going to go into the C drive. So C drive में गया, then it is going to look for the file name F1. अभी F1 फाइल है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं No. है। नहीं है। बिकॉज मैंने यहाँ पे मैंने हार्ड कोड किया है ना, यहाँ पे मेरे को हार्ड कोड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज हम फाइल सिस्टम्स ले रहे हैं, तो मेरे को फाइल का नाम देना पड़ेगा। ये फाइल के में से जाके कंटेंट को रीड करो, बट कंटेंट को रीड करने से पहले उसको ओपन करो। बट समवन हैज डन द मिसचीफ, ही हैज चेंज्ड द फाइल नेम। सो एज सून एज द कंट्रोल कम्स हियर एट दिस प्लेस, इट इज गोइंग टू गिव एन एरर एंड इट इज गोइंग टू टर्मिनेट द कोड। प्रोग्राम में से बाहर निकलेगा। फिर हमको क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा कि फाइल नेम क्या है, A1 कर दिया है किसने। तो मेरे को प्रोग्राम में जाके एल्गोरिदम, प्रोग्राम में जाके स्टेटमेंट के अंदर चेंज करना पड़ेगा। अभी सोचो, इसका मैंने अगर exe फाइल बना के रखा है तो C का exe फाइल बनता है ना। as soon as you compile C code, what it does? Yes, sir. अरे everyone you जिसके ठीक है, as soon as you compile the code, what it does? It is going to create an exe file. So there is no need of compiling the program again and again. What I'll be doing, I'll be creating one exe file and I will be giving that exe file to the client along with the file. And I will be telling my client, जिसको मैंने फाइल दिया है, मैंने उसको बोला है कि भाई C ड्राइव के अंदर F1 नाम से जो फाइल है उसको कॉपी करके रखो, नथिंग एल्स यू डू। तो मेरा ये exe फाइल ठीक ठाक चलेगा। बट अभी सोचो, वहां का जो सिस्टम एडमिन है, जिसको मेरा क्लाइंट जो है, वहां के सिस्टम एडमिन ने क्या किया? C ड्राइव फुल हो गया बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन। ठीक है, बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन C ड्राइव फुल हो गया। देन दैट पर्सन व्हाट ही हैज डन, ही हैज मूव्ड दैट फाइल फ्रॉम C drive to D drive. He has moved the file from C drive to D drive. So location change हो गया। ठीक है, location change हो गया, but at the time of opening of a file, what I've given? I've given an hard coded that you just go to the C drive and search for the file a1.txt, which is not present. So at this place also, it is going to give an error. So file name अगर change किया, error आ जाएगा। Location change किया, error आ जाएगा। अभी सोचो, ये जो टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, ये जो टेक्स्ट फाइल है a1.txt, उसका एक्सटेंशन मैंने चेंज किया। तो क्या किया? CSV। ठीक है, instead of text file, I have converted the extension, I have changed the extension to CSV. Again, the same problem. It is going to search for the C drive A1 file with the extension txt, but someone has changed the extension. So again, it is going to give an error. Why? Because someone has changed the type also. Someone has changed the name and location. So these are the problems you will be facing whenever you are making the use of file system. ये सब प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो विंडो है, जस्ट रीड दैट। Analyze the second portion. I just share my screen. No? File permissions. Analyze this thing and tell me what is the problem you are going to face. If a file is password protected. Very nice.
Okay, once again, you just tell me what you have told. If file is password protected or everyone is allowed to open the file. Okay, so password protected. Okay, anything else? Sir, if I share a file, someone may misuse that data. If I share the file, someone may misuse the data. Sir, if you don't have read-write access. Very nice. ठीक है, अभी now see, suppose if you want to write the contents in the file, what access you should have? Read, write, execute. Read, write, execute. अभी read, write, execute मत बोलो, because you are talking about ch mode. ऐसा कुछ होता है क्या? अभी Ubuntu में या Linux में काम करते हो क्या? No, sir. हाँ? Sir, no, sir. हाँ, क्योंकि read, write, execute पे मत जाओ, because we are talking about the text file. ठीक है, we are not talking about the application files. Okay, so what happens? Permission changes. Like suppose if I want to write any content in the file, what permission should I? Write का permission होना चाहिए, तो ही मैं फाइल के अंदर लिख सकता हूँ. लेकिन अगर मैंने परमिशन चेंज किया, राइट की जगह पे उसको मैंने रीड ओनली कर दिया, ठीक है, राइट की जगह पे मैंने परमिशन रीड ओनली किया, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कुछ भी मैं राइट करने को जाऊंगा, if I try to write anything in the read only file, it will be not allowing me to write. So unnecessary, ठीक है, unnecessary whatever data we have inserted will be not get stored. Why? Because of someone has changed the permission manually. बहुत इजी है, बहुत इजी है. कैसे तुम परमिशन चेंज कर सकते हो? अगर मैं यहाँ पे गया, कोई तो ड्राइव में चले गया. ओके, सो सपोज इफ दिस इज द फाइल, इसका मेरे को परमिशन चेंज करना है. राइट क्लिक ऑन दैट, आई गो टू प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे देखो एक चेक बॉक्स है, रीड ओनली. अभी इसको मैंने रीड ओनली कर दिया, and if anyone tries to insert the data in this file, it will be not allowed. Why? Because it is the permission has changed. एडवांस में जाके उसको मैंने हिडन कर दिया. एडवांस में जाके देखो बहुत सारे परमिशंस होते हैं, या तो नेटवर्क परमिशंस होते हैं, ठीक है. So this is the problem you are going to face if you are making use of file systems. Now read this thing, analyze this portion and tell me what is happening. We wanted to search IDs with more than 100. हाँ. Employee ID which who has more than 1000 ID. बराबर. अभी यहाँ पे देखो फाइल सिस्टम के अंदर मैंने स्टोर किया है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? अगर फाइल से अगर कुछ भी रीड करना है तो मेरे को पूरा का पूरा फाइल ओपन करना पड़ेगा. गेटिंग? एवरीवन इज गेटिंग और नॉट? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. because only Yes, few, sir. yes, Yes, sir. yes, Yes, sir. yes, because only Yes, few sir. Yes, sir. oh, very nice. Because only few students are answering, they are in interactive. Remaining students, ठीक है, एक तो चैट बॉक्स में मत डालो, बिकॉज पता नहीं चल रहा है. माइक ऑन करो एंड जस्ट टेल मी व्हाट यू वांट टू टेल मी. Okay, so what is going to happen here in both these cases? ठीक है, the same problem you are going to face in तू तिथून म्यूट कर ना, मी इथून करतोय. त्यांचं चुकून अनम्यूट होऊन जाते वाटतं. Okay, so in both these cases what is going to happen? Now in the first case if you look, पहला केस अगर मैं कंसिडर करता हूं, हमको क्या फाइंड करना है? We want to search all the employees whose ID is more than 1000, whose ID is more than 1000, and more than 1000 IDs from here the employees are present. ये एक मेरा कंडीशन है. इसके अंदर लास्ट वाला जो मेरा फाइल है उसके अंदर मेरा कंडीशन क्या है कि वी वांट टू प्रिंट ओनली द नेम ऑफ द पर्सन, ओनली द एम्प्लॉय नंबर्स, एंड वी वांट टू प्रिंट ओनली द नेम ऑफ द पर्सन, और वी वांट टू फेच
but still I have shown you the same things, whatever is present here. Why? Because as I said, in both the cases, if you want to extract the data conditionally, or if you want to fetch the data of only specific columns, not all columns, only specified columns का अगर मेरे को data access करना है, या तो फिर मेरे को conditional data access करना है. But as I am making use of file system, what I have to first open the file, and as soon as I open the file, every content which is present in the file, all the content which is present in the file will be visible in the, will be available in the memory, will be available in the memory. And from that available content which is present in the memory, from that we are going to extract only those records which are IDs greater than 1000. तो मेरे को लॉजिक लिखना पड़ेगा. अभी सोचो 2000 records हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, because 2000 records can be easily managed in the memory. But now let us assume there are 20 million records in one file, or there are 50 million records in one file. Okay, so you are what you, if you want to search any content in the in 50 million content, that is in 15 million this thing data, ठीक है, उसमें से मेरे को सिर्फ एक रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, एक डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा 50 मिलियन का जो डेटा है उसको मेरे को मेमोरी में ओपन करके रखना पड़ेगा. तो अननेसेसरी मेमोरी वेस्टेज होता है, अननेसेसरी मेमोरी वेस्टेज होता है, और जितना फाइल बड़ा उतना मेमोरी वेस्टेज लॉस ज्यादा होगा और तुम्हारा प्रोग्राम कंप्यूटर स्लो पड़ जाएगा. बिकॉज तुम लोग क्या करते हो, एक रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए, एक रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए तुम लोग फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट है सबको तुम लोग मेमोरी में ओपन करते हो. इन बोथ दिस केसेस, इन बोथ दिस केसेस, and these are the problems, and these are the problems you are going to face if you make the use of the file systems. Okay, so उसका एडवांटेज भी होता है, उसका एडवांटेज भी होता है. सो एडवांटेजेस आर वेरी, आई मीन नॉमिनल एडवांटेजेस आते हैं, आपने वो नोटिस भी किया रहेगा, ठीक है. बट दिस इज हाउ द फाइल्स कैन बी स्टोर्ड, ठीक है. ऑल फाइल्स, ठीक है. अ फ्लैट फाइल डेटाबेस इज अ डेटाबेस दैट स्टोर्स द डेटा. फ्लैट फाइल सिस्टम्स बोलते हैं, या तो फिर फाइल सिस्टम्स बोलते हैं, या तो फ्लैट फाइल सिस्टम्स, कुछ भी बोलो, दीज आर द टेक्निकल वर्ड्स, ठीक है. फ्लैट फाइल डेटाबेस इज अ डेटाबेस दैट स्टोर्स द डेटा in the plain text file having the extension. It can be either a text file, it can be either a text file, it can be a CSV file, it can be a TSV file. CSV का फुल फॉर्म क्या होता है, CSV का फुल फॉर्म is comma separated value. All the values are separated by a comma. So that is considered as a CSV file. TSV is tab की जो होता है ना, tab separated value, ठीक है. So the contents can be in the type txt, it can be of the type .csv, it can be type of tsv. अभी ये जो CSV जो है ना, CSV comma separated value, this extension is very important if you want to migrate the data from one database to another database. जैसे डेटा माइग्रेशंस होते हैं, ठीक है, डेटा माइग्रेशंस होते हैं. अभी से देखो, मेरे को MySQL सर्वर का डेटा ओरेकल में लेके जाना है, ठीक है. तो इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल. व्हाट आई विल बी डूइंग, I will be exporting the data from MySQL and I will be importing the data into Oracle. So उसके लिए बहुत इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. बट आपको अगर Oracle में इंपोर्ट करना है तो आपको कुछ तो कंट्रोल फाइल्स बनाना पड़ता है, कुछ तो कंट्रोल फाइल्स होता है, उसका एक्सटेंशन
File name can be anything, but उसका extension should be CTL. That is considered as a control file. If you don't create the control file, importing of the data of the type CSV is not possible. ठीक है, MySQL के अंदर भी तुम लोग external CSV फाइल को import कर सकते हो. ठीक है, as soon as you move forward, I will be just showing you how you are going to import the CSV files into MySQL. अगर आपको हायर एंड टेक्नोलॉजी पे जब तुम काम करोगे, सी डेटाबेस, नॉर्मल डेटाबेस तो ठीक है, बट अगर आपको डेटाबेस मैनेजमेंट में जाना है, दैट इज अगर आपको बिग डेटा में जाना है, डेटा एनालिसिस में जाना है, विच आर राइट नाउ वेरी हाईली एंड इम्पोर्टेंट जॉब्स, अगर स्ट्रिक्टली बैक हैंड में आपको अगर रहना है, then all these things are very important to know, because if you are knowing this RDBMS, after that only अगर आपको डेटा एनालिसिस में या तो बिग डेटा में जाना है तो आप जा सकते हो, बट बिग डेटा एनालिसिस में जाना है तो आपको नो एसक्यूएल करना पड़ेगा अलॉन्ग विद दिस थिंग. नो एसक्यूएल करने से पहले एसक्यूएल है तो क्या है, नो एसक्यूएल करने से पहले एसक्यूएल होता क्या है वो आपको जानना जरूरी है. ठीक है, सो दिस टॉपिक्स आर वेरी हॉट टॉपिक. ठीक है, so let us not go and discuss all those things, but this is one thread. ठीक है, this is one thread you can just keep in the mind कि अगर मेरे को आगे जाके इसमें काम करना है तो मेरे को ये काम, मेरे को ये सब अच्छी तरह करना पड़ेगा ही. ओके, सो यहाँ पे देखो ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर किया है, यहाँ पे मैंने डेटा को स्टोर किया है कॉमा सेपरेट देने के बाद. ठीक है, every data has been separated by a comma sign. Here if you see employee number, after that I have given a comma, then Raj, comma, K, comma, some date, comma, email ID. Every values, every data has been separated by a comma, and that is considered as a comma separated value. यहाँ पे plain text है, plain text है. ठीक है, so this is how the files can be created and the data can be read it. कर सकते हो, but problems हमने पहले ही देखे थे. अभी आगे देखते हैं, इसका एडवांटेज देखते हैं. ठीक है, फाइल सिस्टम, फाइल हैंडलिंग का एडवांटेज क्या है? You can just read and tell me what are the advantages. What is the first advantage? Advantage of file oriented system. Backup. Backup कैसे ले सकते हो तुम लोग? सर उसको पेन ड्राइव में भी कॉपी कर सकते हैं. सीधा पेन ड्राइव में करो यानी उसका बैकअप हो गया ना. बैकअप का मतलब क्या है? क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट. बैकअप का मतलब क्या है? क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल कॉपी. That is my backup. So it is very simple to take a backup. If I have got a text file, if I have got a notepad file, if I have got an image file, what I can do, I can just copy that image file in the pen drive, or I can just copy that file into some another hard disk. That becomes my backup. So simple it is. या तो फिर आप क्या करते हो, गूगल ड्राइव में स्टोर कर सकते हो, या तो गिटहब में, या तो फिर गिटहब में स्टोर कर सकते हो. क्या होता है, बैकअप बन जाता है. ठीक है, सो बैकअप यहाँ पे लेने के लिए बहुत ही सिंपल है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट. सेकेंड क्या है, डेटा रिट्राइवल. डेटा रिट्राइवल का मतलब इट इज पॉसिबल टू रिट्राइव डेटा स्टोर्ड इन द फाइल in an easy and an effective way. Why? Because if it is a text file, I can just double click on that text file. What it does, it will open my notepad application. सबसे पहले नोटपैड ओपन करेगा, या तो नोटपैड प्लस प्लस ओपन करेगा, और वहां पे ये जो फाइल पे मैंने जो डबल क्लिक किया है उसका कंटेंट्स मेरे को दिख जाएगा. इतना सिंपल है, कुछ प्रोग्राम लिखने का कुछ करने की गरज ही नहीं है. फाइल देखा, डबल क्लिक करो, फाइल ओपन हो जाता है और उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो दिख जाता है. एवरीथिंग इज बीन डिस्प्लेड. एडिटिंग, एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली, हमने जो डिस्कस किया था, ऑल दोज वर द एडिटिंग. डेटा ऐड किया, डेटा को डिलीट किया, डेटा को इंटरचेंज किया,
बिकॉज वो तो मेरा टेक्स्ट फाइल था, इजीली कैन बी एडिटेड. रिमोट एक्सेस in computer based system, it is possible to access the data remotely. कैसे करोगे? वाया नेटवर्क. वाया नेटवर्क. अभी हम लोग जो कर रहे हैं वही ना. ये फाइल आपके पास है क्या? नहीं नहीं है. फिर भी कंटेंट दिख रहा है क्या? यस आप लोग रिमोटली बैठे हो ना? यस सर. Same thing, exactly the same thing right now which you are seeing. This file is not with you, it is with me, but you are accessing, you can see the contents of this file from some another location. Now, अभी मैं फाइल बोल रहा हूँ, फाइल doesn't mean it should be only a text file. फाइल का मतलब टेक्स्ट फाइल नहीं, फाइल का मतलब ऐसा जो कंटेंट जो हम लोग हार्ड ड्राइव में फिजिकल स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं. वो पावर पॉइंट का फाइल हो सकता है, वो वर्ड का डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो पीडीएफ हो सकता है, वो एक्सेल हो सकता है. इट कैन बी अ नोटपैड फाइल, इट कैन बी अ सी फाइल, इट कैन बी अ C++ फाइल, it can be a Java file, it can be a .NET file, because all these files are getting stored into some hard drive, location में सेव होता है. ठीक है. but .NET, Java and C, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? प्रोग्राम्स लिख के प्रोग्राम्स को सेव करते हैं, और प्रोग्राम के अंदर जो डेटा हमको एक्सेस करके प्रोग्राम में से जो डेटा हमने एक्स्ट्रा फेच किया है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग नोटपैड का फाइल यूज करते हैं. सो इन कंप्यूटर एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज अ फाइल. In computer, everything is considered as a file where the data can be stored. Folder is what? It is a collection of files. फोल्डर बोलते वो भी एक कंटेनर है मेरा. सी ड्राइव वो एक कंटेनर है. सी ड्राइव के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स बना के रख सकते हैं. हर एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल्स हो सकते हैं. अभी लास्ट ऑप्शन डेटा शेयरिंग. डेटा शेयरिंग बताओ, व्हाट डज इट मीन? We can share the data in any form basically. वी कैन शेयर द डेटा. अभी देखो मैं क्या करूंगा, आज तो नहीं, कल मैं क्या करूंगा, ये जो मैं अपना फाइल जो है पावर पॉइंट का जो फाइल है उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा. मीन्स व्हाट? डुप्लीकेट कॉपी होता है ना. शेयर किया वैसे. तो हम क्या करने वाले हैं? आई विल बी शेयरिंग दिस फाइल विथ यू. ठीक है. इन द फ्यू हे कोण बनवते असं? अरे तुम एनॉट आहे, माझ्याकडनं ब्लू कलर नाहीच आहे. अरे एनोटेशन आप मत वहां से करो. हाँ. सो डेटा शेयरिंग होता है जैसे इन आफ्टर फ्यू डेज or maybe from today itself, what we are going to do, we will be sharing the recordings. ठीक है. we will be sharing the recordings. So क्या होता है? शेयर होता है. हम लोग एक लोकेशन में रखेंगे और फिर वहां से आपको लोकेशन में से आपको उसको डाउनलोड करके आपके पास रखना है. सो फाइल शेयरिंग होता है. सो वीडियो क्या क्या बनता है? वीडियो का फाइल बनता है, ऑडियो का फाइल बनता है, एक्सटेंशन अलग रहता है, बट ऑल दोस फाइल्स आर अ फाइल. So these are the advantages of file systems. But as I said, advantages are very minimal. Backup करो, data retrieve करो, editing करो, but उसका सबसे ज्यादा disadvantage होता है, जैसे हमने पहले देखा था. उसके अलावा let us understand what are the disadvantages apart from what we have learned. Apart from what we have learned, उसके अलावा क्या disadvantage है, which is very important, and those disadvantages are as follows. अब इसको ठीक से पढ़ो, समझो, and then I will be explaining you. पहला होता है डेटा redundancy. So redundant data, redundancy का मीनिंग आपको पता है क्या? डुप्लीकेट डेटा. डुप्लीकेट. ठीक है. अभी उसको पढ़ो, क्या मैं बोल रहा हूं वहां पे? ठीक है, मैं ही पढ़ता हूं एंड एक्सप्लेन, साथ साथ में एक्सप्लेन करता हूं.
whatever things I've written in the blue color, that is an example, very nice example. Okay. So first we are going to check data redundancy. It is possible that the same information, same, redundancy का मतलब क्या, duplicate ना, same information may be duplicated into different files. Same information may get duplicated into different files. This leads to data redundancy, results in the memory wastage. Results in the memory wastage. अभी सोचो कोई तो एक बैंक है, बैंक ने बोला एक सॉफ्टवेयर बना के दे दो, हमने सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है. So there is one bank and bank have told us to create one software. But when we stored the information of the banks, then a bank details, employee details, उसके customer के details, हमने जब store किया, हमने क्या use किया? Instead of making use of a database, we have made use of the text files, flat files. Now understand what is going to happen. Let us take an example. Suppose a customer have both kind of accounts. बैंक के अंदर दो kind के accounts होते हैं. Current account होता है, दूसरा कौन सा होता है? सेविंग अकाउंट. Savings account. ठीक है. Current account होता है, savings account होता है. Now one person is a businessman. वो business करता है. So businessman can open a current account as well as he can open a savings account. ठीक है, दोनों account open कर सकता है. अभी सोचो. So let us read. Suppose the customer have both kinds of accounts, savings account and current account. In such situation, a customer details are stored in both the files. अभी देखो, savings account का data savings के file में होगा, current account का information current account में रहेगा, ठीक है. अभी एक जो person है उसका savings account भी है और current account भी है. तो जब whenever we open the account, bank will be getting some information from us. What? Our name, हमारा नाम लेंगे. I mean, they are going to collect the name. They are going to collect the address. They are going to collect the phone numbers and remaining things. Bank account holder का details हमको देना पड़ता है. तब तक ने तो account open नहीं होगा. अभी सोचो कि ये person के पास दो account है, उसने personal details दिए. Both this personal, I mean, his personal details has been get stored into two different files. Why? Because they have two different accounts. So once the details will be going into the savings.txt file and another details will be gone into the current.txt file. So means what? Person one having the same address will be get stored here as well as here. Duplicate हो गया. Duplicate हो गया. ठीक है. So ये मेरा problem हो सकता है when we make the use of file system, that is data redundancy. Next is data inconsistency. Data inconsistency. Inconsistency का meaning क्या है? It is a pure English word. Inconsistency means what? Basically, he is not in the rhythm form, basically fluctuating. Sir, different. Not same. Irregular. Different. Not same, not regular. ठीक है, not Unstable regular. state. Not regular. Not regular. Data Very is not a proper format. Data is not in proper format, not regular. Very nice. Okay, so now let us understand data inconsistency. Because the data has been redundant. अभी ये देखो, ये जो point है वो पहले के point पे based है. Inconsistency कब बनेगा? जब duplication होगा तब बनेगा. ठीक है, अगर मेरा एक ही मेरे पास डेटा है तो इनकंसिस्टेंसी रहेगा क्या? नहीं रहेगा. ठीक है, मेरे पास अगर डेटा डुप्लीकेट हो रहा है तब मेरा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है. कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड. इट इज पॉसिबल दैट डेटा मे नॉट इन अ कंसिस्टेंट स्टेट. ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेटा रिडंडेंसी, because of the data redundancy, it is not possible that the data may
be in the consistent state? नहीं पता चला, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. हमारे यहाँ पे ऊपर हमने देखा there is one person, उसका डिटेल्स दो अलग अलग फाइल में है, बिकॉज उसके पास दो अकाउंट्स है, दैट्स वाई. Suppose the customer changes his or her address. This may be possibility that, ठीक है, there can be possibility that address is changed only in one file, which is that file savings file, and another file that is current.txt file remains unchanged. अभी सोचो, सेविंग्स अकाउंट के अंदर नया एड्रेस उसने, जो भी एम्प्लॉय है, बैंक के एम्प्लॉय ने क्या किया, सेविंग्स अकाउंट के अंदर उसका एड्रेस चेंज किया. उसको ऐसे लगा कि भाई ये पर्सन का सिर्फ एक ही अकाउंट है, ये कंसीडर करके उसने क्या किया, सेविंग्स अकाउंट के अंदर चेंज किया. तो अभी होगा क्या, सेविंग्स अकाउंट के अंदर एड्रेस एंड करंट अकाउंट, ये जो टेक्स्ट फाइल है, in that particular his address will be different. So means what is happening? One person for savings account and the same person for the current account will be having two different addresses. So बैंक जब correspondence करेगा, बैंक को अगर कुछ लेटर भेजना है, बैंक ने क्या किया, सेविंग्स अकाउंट का फाइल ओपन किया, वहां पे कस्टमर का एड्रेस लिया और उसको भेज दिया, तो उसको मिल गया, जो भी लेटर्स उसको भेजना था मिल गया. बट बैंक को अभी क्या करना है कि करंट अकाउंट के जो कस्टमर्स हैं उनको लेटर भेजना है. बट व्हेन दे ओपन, द पर्सन विल बी हैविंग सम डिफरेंट एड्रेस, previous address. Bank what it does, it takes the same address and they post the letter. वो लेटर तो उसको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, बिकॉज वो तो गलत एड्रेस पे जा रहा है, जहां पे वो रह नहीं रहा है, where he is not staying. So this is the possible, or these are the possibilities when the data is getting redundant, inconsistency बन जाता है because of certain reasons. Then इसके बाद होता है लिमिटेड डेटा शेयरिंग. ठीक है, लिमिटेड डेटा शेयरिंग. Now understand and tell me what is happening. Limited data sharing. Data are scattered. अभी यहाँ पे देखो मेरा डेटा स्कैटर हुआ है दो जगह पे. कौन सी जगह पे, एक तो savings.txt फाइल में है एंड दूसरा जो डेटा है is in the current.txt file. So my data is getting scattered into multiple files of the single person. Redundant. ठीक है, अभी यहाँ पे पढ़ो, the data is scattered in various files and also different files may have different file formats. ठीक है, the data is scattered into different files and those files may have different file formats. File formats का मतलब क्या, extensions अलग अलग हो सकते हैं. For example, text file, CSV file, TSV file, JSON file. आगे जाके आपको ये JSON भी बहुत यूज करने वाले हैं हम लोग. Only the thing is which you are not going to use, that is XML. But till JSON, we are going to use all those extensions. Sir, Ah, by any chance, can you show us an example of TSV and JSON file today? if you want to see how the TSV file it looks, just if I am having, I just check it here. मेरे पास यहाँ पे है क्या? Go to C drive. Okay. So यहाँ पे मेरे पास एक JSON फाइल है. आपने नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल किया है क्या? Yes, All this. sir. Yes, sir. हर एक के पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं सर, नोटपैड No, sir. नहीं है सर. अगर नहीं है तो इंस्टॉल करो नोटपैड प्लस प्लस. वेरी सिंपल, डाउनलोड करो, इंस्टॉल इट. ठीक है, डोंट यूज नोटपैड फॉर एन एडिटर, एज एन एडिटर. ठीक है, मेक द यूज ऑफ नोटपैड प्लस प्लस एज एन एडिटर बिकॉज उसका इंपॉर्टेंस
आप जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजी में पढ़ने जाओगे ना, उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो बाद में जब तुम लोग नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करने बैठोगे, उससे अच्छा पहले से प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे मेरे पास देयर इज वन फाइल employee.json, इसको मैं ओपन करके बताता हूँ, दिस इज हाउ इट लुक्स। अभी पता चल रहा है कि किसके अंदर क्या है। यस सर। ठीक है, तो यही जेसन फाइल हम लोग जब MongoDB करेंगे ना, एज आई टोल्ड यू, ठीक है, ऑल दिस एक्सटेंशंस वी आर गोइंग टू यूज, एंड वॉट एवर फाइल आई एम शोइंग यू राइट नाउ ऑन द स्क्रीन, द सेम फाइल आई विल बी गिविंग टू यू। ये सेम फाइल मैं दूंगा और आपको बोलूंगा कि ये फाइल को आपको अपलोड करना है, दैट इज इंपोर्ट करना है। कैसे करना है आई विल बी शोइंग यू, आई विल बी गिविंग यू द कमांड, साथ साथ करके देखेंगे। तो ये जो डेटा आपको अभी, ये जो डेटा आपको दिख रहा है, ये सब डेटा हम लोग MongoDB में इंपोर्ट करने वाले हैं। तो दिस इज द जेसन का फाइल होता है, इसका एक्सटेंशन देखो जेसन है। और मेरे पास यहाँ पे CSV फाइल तो नहीं है, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है, ठीक है, department1.csv। इसको अगर इफ यू राइट बटन एंड ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस, see all the values are getting separated by a comma, and if you don't right button and click, if you don't right button and click open with notepad या तो edit with notepad अगर नहीं करोगे, डबल क्लिक करोगे डायरेक्टली, तो यहाँ पे देखो उसका आइकन देखो, एक्सेल का शीट जैसे दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ, ठीक है, तो okay, so CSV file automatically, if you double click, it opens into Excel format where all the values will be shown in separate cells. But this is not an Excel file, it is a CSV file. CSV file by default opens into Excel application. ठीक है, तो अगर आपको Excel में ओपन नहीं करना है, राइट बटन दे दो, ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस करो। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, माइक बनाओ। गौरव, हेलो गौरव, हाँ माइक बंद करो। भारत, ओके सर। भाग्यश्री, हाँ। Okay, so let us again move forward. Limited data sharing. Data has been scattered into various files and also different file types, file formats. For example, these are text file, CSV file, TSV, JSON, and so on. And these files may be stored into different folders. So due to this, it is difficult to share the data among different applications. अभी यहाँ पे मैंने जब बोर्ड पे आपको सिखाए थे, ठीक है, बोर्ड पे जब मैंने बताया था कि there is one C file. C file is reading. There is one C program. C program is reading one file which is stored into the C drive, having the extension txt file. The file name was f1.txt. अभी सोचो कि मेरे पास अगर एक डेटा जो है वो बहुत सारे फाइल के अंदर स्कैटर्ड है, मेरे पास कोई एम्प्लॉय का डिटेल्स है वो अलग अलग फाइल्स के अंदर स्कैटर्ड है, और हर एक ने क्या किया है, फाइल एक्सटेंशन अलग अलग दिया है। कोई ने तो फाइल बनाया .txt नाम से, कोई ने तो फाइल बनाया .json नाम से, कोई ने तो फाइल बनाया .csv नाम से। अभी अगर मेरे को कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, if I want to write one software, if I want to write a program, and if my data is scattered into different files with different extensions, different file with different extension, then how I'll be writing a logic? Because my file extensions are different, my file locations are different. Okay, so it will be very much difficult. It is not like that it is impossible to do. Possible है,
कर सकते हैं, प्रोग्राम लिख सकते हैं, बट इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट, बहुत लेंदी लॉजिक लिखना पड़ेगा. एंड दैट इज वाई लिमिटेड डेटा शेयरिंग फाइल हैंडलिंग फाइल सिस्टम्स में होता है. एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज data isolation. Data isolation. Read this thing and tell me whether like this is how it is happening or not. ऐसे ही हाँ काम होता है क्या, चेक करते हैं. Data isolation, because the data is scattered into the various files and the files may be in the different file formats. For example, writing an application program. ठीक है, writing a new application program to retrieve the appropriate data is difficult. ठीक है, जैसे डेटा लिमिटेड डेटा था वैसे ही यहाँ पर है कि मेरे पास अगर फाइल एक्सटेंशंस और वो सब डिफरेंट हैं, then how the person is going to write the application, because the file formats are different, the file locations are different. Why? Because the data has been isolated into different file formats in different location. अगर एक ही जगह पे हैं, अगर अभी सोचो कि मेरे पास बहुत सारे रूम्स हैं, या तो मेरा कॉलेज के अंदर बहुत सारे रूम्स हैं. ठीक है, मैंने आपको कॉलेज के बाहर खड़ा रखा और बोला कि एक कॉलेज के अंदर एक रूम है, वहां पे मेरा लैपटॉप है, उसको लेके आओ. तो क्या होगा? It will be very much difficult for you to what? To find that laptop. Why? Because there can be hundreds of rooms. So what you have to do, you will be going into each and every room for searching for the laptop. So that makes the things difficult. अगर मैंने बोला कि ठीक है लैब में जाके मेरा ये लैपटॉप लेके आओ, तो आपके पास एक टारगेट है, आपके पास एक लोकेशन है कि भाई वहां से मेरे को लैपटॉप लेके आना है. So data isolations. And last one, data security. Data security. Data should be secured from unauthorized access. Unauthorized access. For example, account holder in a bank. कोई तो बैंक के अंदर एक अकाउंट होल्डर है. An account holder in a bank should not be able to see the account details of another account holder. आपको ऐसे होता है क्या? बैंक में जाने के बाद अगर आपने आपका अकाउंट नंबर बोला, या तो वो मोबाइल से, if you want to see what is the balance in my computer in my bank, as soon as you give the account number, it is going to show me the details only of your account. बाकी के आजू बाजू के अकाउंट डिटेल्स दिखता है क्या? नहीं दिखता. ठीक है, सो दिस सिक्योरिटी फाइल सिस्टम्स में देता नहीं है. सो दिस आर द डिफरेंट डिसएडवांटेजेस. ठीक है, दिस आर द डिफरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल सिस्टम्स. सो एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क till now, whatever things we have learned? No sir, all clear. ठीक है, अभी all these things, ठीक है, all these things, as I said, all these things are not practically to be shown. ये practically नहीं है, but ये क्यों बताना पड़ता है? ठीक है, why these things are required? Because see, when in the future, if someone asks you, if you go to the interview and if the interviewer asks you why you have made the use of a database, why not file handling, then you should be able to answer why not. And because of that, we are making the preparations कि भाई फाइल हैंडलिंग के अंदर हमको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों यूज करना है. जो स्टूडेंट्स, मैंने बोला था ना कि स्टूडेंट पूछते हैं, पूरा डेटाबेस खत्म होने के बाद स्टूडेंट आर आस्किंग अस और आस्किंग मी why this database we are using. So after all, database, either you make use of a text file or either you make use of MySQL. After all, what is the purpose? To store the data permanently. बट फाइल के अंदर डेटा स्टोर करते हो, तो ये लिमिटेशंस और ये डिसएडवांटेजेस आपको बता दिया. तो नाउ यू आर बेटर
अगर आपको you are better in charge, like whenever I develop any application, अगर प्रोजेक्ट्स करोगे तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं डेटाबेस फाइल हैंडलिंग का ले लूं या फिर मैं डेटाबेस MySQL या तो फिर कोई भी RDBMS ले लूं। तो आपको जज करते आना चाहिए। ठीक है, so we'll do one thing. Let us begin with what is database. So let us not do it today. Okay, so any question you want to ask before you leave, because this is the first day. ठीक है, so आप first day इतना हम लोग तो first day था, इसके लिए we are moving very slowly. Maybe from tomorrow or day after tomorrow we are going to pick up the speed. Now I am just closing this session here so that the remaining student जिसका installation नहीं हुआ है, ठीक है, जिसका install हुआ है, they can leave the meeting and then the meeting सोडायला सांगायचं. Okay, no one ठीक है, no one should leave the meeting. ठीक है, and जिसका installation नहीं हुआ है, ठीक है, we will be guiding you so they can share the screen and we will be solving their problems. ठीक है, so should we stop the lecture here today? This is only for today. Sir, one question. Yes. We differentiated between file systems and database systems, but normally do we use them together? जैसे WhatsApp में होता है, जैसे file systems हमारे images वगैरह files में वही तो हो सकता है ना, हो सकता है ना. That is the thing, no. ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई फाइल सिस्टम आप यूज ही नहीं कर सकते हो. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फाइल सिस्टम यूज ही नहीं करना होता है. यू कैन हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग. दैट सी दैट थिंग इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन वी आर डेवलपिंग. ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन वी आर डेवलपिंग, टू हुम वी आर डेवलपिंग. मेरा क्लाइंट कौन है, मेरा क्लाइंट का नेसेसरी क्या है, ये जब तुम लोग ऐसे ही करोगे ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब करोगे ना, ठीक है, तब आपको SDLC पता चलेगा कि भाई हमको जब क्लाइंट को एप्लीकेशन बना के देना है तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है. अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी हैव टू डिजाइन द डेटाबेस. सो एज आई सेड वी आर गोइंग टू स्टिक ओनली टू द बैक एंड. सो मैंने क्या किया, हमारा फाइल हैंडलिंग सिस्टम का लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स मैंने बता दिया है. अभी अगर मेरा क्लाइंट मेरे को बोलता है कि नहीं मेरे को ऐसा ही करना है, तो क्लाइंट को ना नहीं बोल सकते. बट क्लाइंट को मेरे को लिमिटेशंस बताना पड़ेगा ना कि भाई तुमको हम करके तो देंगे, फाइल सिस्टम यूज करके देंगे, बट उसका लिमिटेशन क्या क्या होने वाला है ये आपको अगर पता होगा, देन ओनली यू कैन एक्सप्लेन टू द अनदर पर्सन ना. यस, ठीक है. सो व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर उनके लिए ऐसा लगा कि भाई ठीक है, व्हाट्सएप के अंदर हम लोग जो इमेज भेजते हैं, दैट इमेज शुड बी गेट डाउनलोडेड इन माय लोकल मोबाइल. तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउनलोड हो जाता है. हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना. कभी तुमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद कभी भी एरर आता है क्या आपको? एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर एरर्स आते हैं क्या? ठीक है, अगर ओके, इफ यू सी एन एरर, वो सॉफ्टवेयर क्या बताता है, गो टू द लॉग फाइल एंड चेक द एरर्स. कभी कभी ऐसे बताता है क्या? यस, बताता है ना. सो व्हाट, वी आर इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर इन सम रिमोट लोकेशन. We are installing the software in some remote location, but at the time of installing, if the error occurs, what it does, it is creating a file. It is creating a log file, and in that log file, it is going to tell me what is the problem. Okay, what is the problem the software has faced at the time of installation. ठीक है, तो ये ऐसे में बोल नहीं सकता कि भाई नहीं आपको फाइल हैंडलिंग यूज ही नहीं करना है, आपको सिर्फ डेटाबेस यूज करना है. इट इज नॉट प्रॉपर, इट इज नॉट राइट थिंग. ठीक है, इट कैन बी, वी कैन हैव द कॉम्बिनेशंस आल्सो, बट व्हाट वी हैव लर्न, वी हैव जस्ट लर्न व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इफ यू स्टोर द डेटा इनटू द फाइल सिस्टम्स. ओनली दैट थिंग, दैट इज द पर्पस. एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. ठीक है, ठीक है. No, sir. I will do one thing. I'll be stop sharing the screen.
और ये जो स्लाइड्स है ना, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो ये थ्योरेटिकल वाला जितना भी स्लाइड है मैं आपको मैं शेयर करूंगा, बट एवरीथिंग इन द स्लाइड इट इज नॉट गिवन, सो वॉट एवर आई स्पीक एक्स्ट्रा, ठीक है, वो उसको अगर नोट डाउन करना है तो टेक अ नोटबुक एंड यू स्टार्ट राइटिंग द कंटेंट्स व्हाट आर आई स्पीक विच इज नॉट प्रेजेंट इन द स्लाइड्स, ठीक है. सो यू हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स, ठीक है. सो बाय बाय टुमारो शार्प एट 9 o'clock, ठीक है, शार्प एट 9 o'clock we'll start the session. Okay, sir. Okay, sir. I'm just Okay, sir. Thank you. हेलो सर. हाँ बोलो. यस सर इसका शाम को इसका वीडियो मिल जाएगा ना? हाँ आज आपको मिल जाएगा, बट आपको अभी मीटिंग लीव एवरी नो वन इज गोइंग टू लीव द मीटिंग. 118 स्टूडेंट्स आते, so no one is going to leave the meeting unless and until Omkar sir, now he is going to drive the remaining session. वो आपको इंस्टॉलेशन के बारे में बता देगा. सो जब तक ओमकार सर बोलते नहीं ये टू लीव, you have to stay in the meeting. Okay. Okay, sir. Okay, sir. So I am just Okay, sir. stopping the screen sharing. Hello, am I audible? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Listen one thing, there is a note that some of the students, at least 6 students, have not shared the undertaking form. Who are those? Yes, sir. I am Yogesh. Okay, one is Yogesh. Next. I want the name of 6 students. Sir, Anmol. Anmol, Yogesh, Chinmay, sir. Chinmay third, Shweta fourth. More 2 students are there. Two students are absent, sir. No. They have not joined the course. So all 118 students are present. From 118 students, I want the name. Okay. Only 4 names I have got. Those 4 students, Anmol, Sandeep, those who were there, please send the form immediately. Yes, sir. Yeah. मुझे ये बताओ किसका इंस्टॉलेशन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है? जो बीच में अटके वो नहीं चाहिए, किसी ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है. जो सर हाँ बोलो. मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया. हाँ, उसके बाद किसको एरर्स आ रहे थे? रुको बोलो मत कौन से एरर्स में बता रहा हूँ. एटलीस्ट फर्स्ट 2 स्टेप में जिसको एरर्स आ रहे हैं, जो कि वो 5 फाइल्स है या 4 फाइल्स है, वो सिर्फ वही दिख रहे हैं, वो कितने लोग? सर जिनका इंस्टॉलेशन हुआ है वो लीव हुए तो चलेगा? नहीं, रुको ना जरा, मैं बोल रहा हूँ. जिनका बाकी है उनमें से जिसका फर्स्ट या सेकंड स्टेप पे नहीं हुआ है, उधर से ही आगे प्रॉब्लम आ रहे हैं. सर मेरा फर्स्ट डाउनलोड हो चुका है लेकिन वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है. हाँ ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करो तुम्हारा. 1 मिनट. शुभम. हाँ कर देता हूँ. और बाकी के लोग जिनका हो गया है और जिनका बाकी है, वो जो व्हाट्सएप में आपका नाम होता है ना, वो नाम आपका पूरा नाम डालो, क्योंकि ग्रुप में नहीं क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नाम के जगह कुछ और है. व्हाट्सएप में आपके खुद के प्रोफाइल का जो नेम है ना, वो चेंज करो अपने फुल नेम से अब भी.
मुझे ग्रुप में सबके नाम दिखने चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट सेविंग एवरीबॉडीज नंबर, किसी का ब्लैंक है किसी का कुछ है, तो फुल नेम्स में कन्वर्ट करो उसको व्हाट्सएप में। सर स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? हाँ, अरे तेरा 7 है ना? हाँ वही प्रॉब्लम हो गया है। हाँ तो प्रॉब्लम, नाम क्या है तेरा? ओमकार? शुभम पाटिल। शुभम, विंडोज 7 नहीं है मेरे को, और कोई था, मुझे कल मैसेज किसने किया था? हाँ सर, मैंने मैसेज किया था विंडोज 7 के लिए। हाँ तो वही, अभी वो मैं बोला ना कल कि देखते हैं क्या होता है, देखो इस बार इंस्टॉल करके। हाँ। पहले किया है क्या? कोई इंस्टॉल नहीं है ना? नहीं नहीं सर, नहीं किया। दिखा जरा, इंस्टॉल पे क्लिक कर। सर मैं स्टॉप करूँ क्या? ये मेरी स्क्रीन है। नहीं नहीं, तू कर ना इंस्टॉल पे स्क्रीन, दोनों का 7 ही है विंडोज कर, तू ही कर, वो भी देख लेगा। क्लिक कर इंस्टॉल पे, क्या एरर आते हैं देखते हैं। हेलो हाँ हेलो सर, मैं उबंटू यूज कर रहा। रुको रुको, रन पे क्लिक कर। उबंटू वालों रुक, बाकी के लोग रुको, अभी जिसका विंडोज 7 है सिर्फ वही ध्यान दो यहाँ पे फिलहाल, एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्या दिखा रहा है, क्या लिखा है? मुझे दिख नहीं रहा है ठीक से, बोलो पढ़ो। दिस एप्लीकेशन रिक्वायर्स .NET framework 4.5.2. Please install the .NET framework. The run this installer again. अभी एक काम कर, जहाँ से तूने ये EXE फाइल डाउनलोड की थी ना, हाँ वहां पे और 3 फाइलें देख। अच्छा। वो ड्राइव पे थी, वो वहाँ पे तो और 3 फाइल है, वो तीनों फाइल डाउनलोड कर। ओके। सेम वो दूसरा विंडोज 7 वाला, तो वो ड्राइव से हाँ सर। तीनों फाइल डाउनलोड करो, मेल से जाके। हाँ तब तक दूसरा कोई स्क्रीन शेयर करो। विंडोज 11 वाले में से कोई तो एक स्क्रीन शेयर करो जिसका स्टार्टिंग से इंस्टॉलेशन बाकी है। विंडोज 11 है क्या किसी का विंडोज 11? हाँ श्रद्धा, सौरभ। नहीं सर, मेरा 10 है। ये किसका स्क्रीन शेयर है? मेरा सर, सौरभ लट्टा। मैं बोल रहा हूँ विंडोज 11 कौन है क्या? नहीं सर, ठीक विंडोज है 10 है चल, मेरा। मेरे को भी प्रॉब्लम आ रही थी सर। नहीं प्रॉब्लम क्या आ रहा है? स्टार्टिंग से प्रॉब्लम आ रहा है, बीच में से प्रॉब्लम आ रहा है? स्टार्टिंग से प्रॉब्लम आ, मतलब बीच में से आ रहा था तो मैंने वापस हाँ अनइंस्टॉल अभी एक करके काम पूरा कर, पहले कंट्रोल पैनल में जा। कंट्रोल पैनल में सर वो कर लिया मैंने, अभी मेरे को वापस देखना है, मेरे को डाउनलोड देखना किया। है, मेरे को देखना है, कंट्रोल अच्छा पैनल में एक, जा। हाँ व्हाट्सएप में नाम चेंज किया क्या सबने? यस सर। सर। चाहिए सबका? यस सर, क्या यस सर। यस सर, क्या है? और कितने लोग ऐसे जिन्होंने नाम तक नहीं डाला है? सर अगर इंस्टॉल हुआ है इंस्टॉलेशन के बाद की प्रोसेस सर बता देंगे आपको। सर। हाँ सर अभी आपको देखने वाले थे नहीं? मेरे को दिख रहा है सब, नीचे स्क्रॉल कर, माई स्केल तक आ जा। हाँ एसक्यूएल के सब मैंने हाँ इंस्टॉल एक कर काम दिया। कर, सी ड्राइव में जा। सी ड्राइव में? सी ड्राइव, तो विंडोज के ड्राइव में जा, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले। उसमें व्यू का ऑप्शन है, देख ऊपर व्यू में हिडन फाइल्स को चेक बॉक्स में क्लिक कर, ऑल फाइल एक्सटेंशंस को। और एक ऊपर उसमें व्यू में हिडन फाइल के ऊपर भी और एक एक्सटेंशन बॉक्स है, एक्सटेंशन का, ये नीचे फाइल नेम एक्सटेंशन। कर दिया सर, इसको चेक। दूसरा चेक बॉक्स किया शायद तूने। हाँ ठीक है, एक काम कर, अभी इसको है ना, इसको रहने दे, स्क्रीन पे क्लिक कर कहीं तो। हाँ और एक काम कर, अभी है ना ये जो नेम, जो नेम का जो है ना, डेटा मॉडिफाइड और नेम, डेट मॉडिफाइड और नेम का, ये जो बीच में लाइन दिख रही है क्या? ऊपर स्क्रीन शेयरिंग का रहा। नहीं, ये वाला जो, हाँ डेट मॉडिफाइड के बाजू में देख, थोड़ा सा छोटा सा लाइन है, देख ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ ये उस तरफ वाला, उस तरफ वाला इधर। हाँ उसको लाइन को डबल क्लिक कर, थोड़ा सा बाजू में ले, वैसे नहीं, ठीक है, इट्स ओके। प्रोग्राम फाइल्स में जा, प्रोग्राम फाइल्स में। हाँ अंदर जा, प्रोग्राम फाइल्स में।
उसमें माइस्क्वेल का फोल्डर है क्या? नहीं है। सर बैक कर और प्रोग्राम डेटा में जा। सर वो डाउनलोड्स में से किया तो इंस्टॉल। नहीं नहीं, अभी प्रोग्राम डेटा में जा ना, फोल्डर देखने दे क्या। ठीक है, नहीं अभी जहाँ पे वो exe फाइल है वहां जा। डाउनलोड जहाँ पे किया ना। हाँ, ये अब ये सर। राइट क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर। मैं जिनके नाम ले रहा हूँ ना, वो लोग सुनो, हाँ, वो उन्होंने अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट नहीं किया है। आलनकर, चिन्मय, अनमोल जाधव, अविनाश कदम, सदानंद गोबड़े, श्वेता एंड महाजन योगेश, और उन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं किया है। जल्दी से फॉर्म सबमिट करो। सुनाई दिया सबको जिनके नाम लिए? यस सर, आज कर देता हूँ मैं। आज नहीं, अब भी चाहिए, अब भी लेक्चर लीव करने से पहले चाहिए वो। We have to send it to the CDAC. Immediately send it right now. सर हाँ सर कंटिन्यू करना है। अरे अभी तक मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। नहीं हाँ दिखा मतलब ये से कुछ है, वो उस पर क्लिक कर दे एक बार। हाँ यस। हाँ उसके बाद ही दिखेगा। और जो स्क्रीन पे आ रहा है ना वही सही तरीके से बताओ। अभी वो येस और नो था तो कंटिन्यू मत बताओ उसको, ना तो उधर क्योंकि कुछ चीजें दिखती नहीं है उस फाइल रन होने के टाइम। यस कर रहा हूँ। हाँ यस कर। एरर आया था, मैं दिखाई नहीं सर दे वो रहा। इसका दूसरे डिवाइस का है। ठीक है, नेक्स्ट करो सर आप। सर नेक्स्ट करना है इसको। यस यस, एग्जीक्यूट पे क्लिक कर। सब लोग सेम स्टेप्स देखो, जिसको भी प्रॉब्लम्स आ रहा है ना एग्री करके इंस्टॉल कर। सब लोग सेम सेम स्टेप्स देखो। अभी इसके बाद ये स्टेप्स से मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला। पहले ये स्टेप्स सब लोग नोट डाउन कर लो कि कैसे क्या करना है। क्लोज पे क्लिक। हाँ होने दे। अभी ये प्रोसेस इसकी हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट कर ये पेज पे। सर ये जो अनचेक बॉक्स है इसको कुछ नहीं नहीं करना है वो उधर लिखा है ना मैन्युअल करके। अच्छा नेक्स्ट। हाँ नो यस करके छोड़ दे इसको। यस, अभी इसको एग्जीक्यूट कर। अभी इसको होने दे। कोई और स्क्रीन शेयर करो तब तक। हाँ ये लोग जिन्होंने अभी अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं भरा है उन्होंने फास्ट अभी के अभी सेंड करना है। और जिनका इंस्टॉलेशन हो गया है वो लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी नाम एक बार चेंज कर दो। हेलो सर। हाँ वो विंडोज 7 का और वो 3 फाइल डाउनलोड कर दिया मैंने वो। हाँ रुक 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 2 मिनट रुक। ठीक। ये क्या है, इस किसका है ये स्क्रीन शेयर? सर मेरा बैक कर एक बार। हाँ नेक्स्ट करके देख। इंटरनेट को कनेक्टेड है ना तेरा लैपटॉप? यस सर। तेरा विंडोज 10 ही है ना? यस सर। नेक्स्ट कर एक बार। एग्जीक्यूट करके दिखा। डाउनलोडिंग फेल बता रहा है तेरा। तेरा कौन सा वर्जन है? 8.26 है क्या या 27? नहीं सर, अभी जस्ट डाउनलोड जो हुआ है 8.26। नहीं फाइल सही तरीके से डाउनलोड नहीं हुए। वापस एक बार डाउनलोड करके देख। सर और पहले काम कर, मुझे इधर प्रोग्राम फाइल्स में जा एक बार। ये कैंसिल कर दे। जिनका हो गया मीटिंग लीव कर सकते हैं। हाँ 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 मीटिंग लीव कर सकते हैं। इसमें माइस्क्वेल का फोल्डर नहीं है। प्रोग्राम डेटा में जा। हेलो सर। हाँ आज 2 बजे मीटिंग होने वाली थी, लैब सेशन। हाँ होने वाला है ना वो। देख ये फोल्डर है ना, ये फोल्डर डिलीट कर। शिफ्ट डिलीट कर माइस्क्वेल वाला। शिफ्ट और डिलीट, परमानेंटली डिलीट कर इसको। शिफ्ट बटन, हाँ कंटिन्यू कर। कहीं तो ये फाइल ओपन है। इसको रुक 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 रहने रहने। डू इट, डू दिस फॉर ऑल करंट पे चेकबॉक्स सिलेक्ट और ट्राई अगेन कर। स्किप कर।
हाँ एक काम कर, ये MySQL नीचे का क्लोज कर पहले, अब वो वापस डिलीट कर फोल्डर। हाँ अभी जा कंट्रोल पैनल में, तेरा जेन्युइन है ना, होम है ना? यस सर। कर जरा एक बार, होम पे प्रॉब्लम आता है क्योंकि कभी कभी होता नहीं है, सबके होम पे प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन कुछ है जिसपे प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ इसको अनइंस्टॉल कर। अब वापस इंस्टॉल कर, क्योंकि होम्स पे कभी कभी सपोर्ट नहीं करता है MySQL। यस अगर आता है तो यस करके ये कर ले। करके देख, नेक्स्ट एग्जीक्यूट कर। प्रॉब्लम आ रहा है। एक काम कर, ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो C++ 2019 ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल फाइल्स है ना, यस सर। इसको इंस्टॉल कर, गूगल से डाउनलोड कर ले। इस पे जा, गूगल पे जा, यहाँ पे टाइप कर विजुअल स्टूडियो रीडिस्ट्रीब्यूटेबल। स्टूडियो रीडिस्ट्रीब्यूटेबल, हाँ 2019 वाला डाउनलोड कर फर्स्ट। हाँ वही से, फर्स्ट वाले से डाउनलोड कर। नीचे आ जा, नीचे नीचे आ जा, वहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? देख, डिस्ट्रीब्यूटेबल फाइल्स ऊपर ले, ऊपर ले, इसमें नहीं है, ऊपर ले थोड़ा सा, नहीं नहीं वैसे रहने दो, ऊपर ले एक बार देखने दो। तेरे पास विजुअल स्टूडियो है क्या रे? नहीं ना? विजुअल स्टूडियो है ना सर, जिसको अपना इंस्टॉल्ड है क्या? हाँ सर। अरे उसको निकालना पड़ेगा पहले, ऐसे नहीं होगा वो फिर। विजुअल ये स्टूडियो कोड नहीं, कोड नहीं रे, नहीं नहीं इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, विजुअल स्टूडियो नहीं है। हाँ वो ओपन कर वापस एक बार, क्लोज मत कर, क्लोज मत कर, ओपन कर, अभी ऊपर ले थोड़ा। हाँ ये देखिए जो है ना, ऑन दिस पेज के नीचे सेकंड वाला ऑप्शन। यस सर। हाँ वहीं पे है ना, नीचे ले, एकदम लास्ट में आ जा। कहीं पे कुछ फाइल्स दिखाई दे रही है क्या? ले नीचे, पैक कर, यहाँ पे नहीं मिलेगा, पैक कर, पैक कर और पैक कर। नीचे लेटेस्ट सपोर्टेड विजुअल C++, ऊपर ऊपर ले, ऊपर ले। ये जो है ना, उसको एक बार न्यू टैब में ओपन कर, न्यू टैब में, न्यू टैब, न्यू टैब, हाँ। और नीचे वाला भी न्यू टैब में ओपन करेगा, ये वाला। हाँ ये तो इधर ऊपर ऊपर, ये ब्लू कलर का है ना इसमें, हाँ उस पर क्लिक कर, नीचे आ जा, है क्या इस पे? नीचे देख,
एक काम कर, मैंने जो शेयर किया है ना फाइल्स, उसमें दोनों दोनों फाइल्स है ना, वो एक बार इंस्टॉल करके देख। ओके सर। वो मैंने जो मेल पे शेयर किया है ना, यस सर। वो दोनों डाउनलोड कर, तीनों डाउनलोड कर फाइल पहले। ओके। मुझे वो कौन सा वाला फाइल है वो नहीं पता है, लेकिन वो है 2017 या 2019 है, देखो। हेलो सर। एक मिनट, ये होने दे, रुक जरा। ऊपर ऊपर वाला। बाकी बैक कर, तुरंत दूसरा भी डाउनलोड कर। नहीं, इसको मत ओपन कर इस तरह का। ओपन है ऊपर ऑलरेडी। हाँ, उसमें से जा। हाँ, उस पर डाउनलोड पे क्लिक करना। ऊपर उधर उसमें भी रहता है। हाँ, सेम दूसरा भी कर। और वो .NET वाला भी कर। सर ये विंडोज 7 का है क्या? नहीं, ये इसको इसको लगता है कि वो, क्योंकि इसमें डाउनलोड नहीं हो रहा है ना, उधर से ले नहीं रहा है विंडोज होम को माइक्रोसॉफ्ट से। अच्छा। बस हो गया क्या डाउनलोड? फाइल डाउनलोड, तो ये वो डाउनलोड होना चाहिए। अभी एक काम कर, कंट्रोल पैनल में से वो इंस्टॉलर डिलीट कर वापस। बंद कर दूं? हाँ, ये क्लोज कर और इंस्टॉलर डिलीट कर कंट्रोल पैनल से। हाँ, इसमें से देखिए विजुअल स्टूडियो के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेबल फाइल्स है, ये क्यों है ऐसे? ये विजुअल डिस्ट्रीब्यूटेबल फाइल सब डिलीट कर। एंटीवायरस है क्या? यस सर। हाँ, तो वो भी ब्लॉक कर सकता है, तो एंटीवायरस को भी डिसेबल करके रखना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये कर ले। इसको क्लोज कर पहले। हाँ, नीचे से क्लोज कर उसको पहले, और वो चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर ले, अनइंस्टॉल कर। ये भी करना है? सब redistributable फाइल की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, ये क्या करना है सर? यस।
सर ये अनइंस्टॉल करने के बाद मैं आगे नहीं करता हूँ। मेरे को स्क्रीन शेयर कर, उसके पहले स्टॉप ये मत कर। दूसरा कोई हेलो सर। 7 वाला नहीं है दूसरा? हेलो सर। हाँ अब पहले इंस्टॉल किया था, फिर से मैंने अनइंस्टॉल कर दिया वो चार जो थे उसके स्क्रीन बाद। शेयर कर, स्क्रीन शेयर। ये हो गया। अरे इसका क्या है, ये नेक्स्ट कर। सर इसके बाद नेक्स्ट रुकिए। अरे ये इसके बाद तो स्टेप्स तो पता है ना? सर वो ये रहने देना है सेटिंग्स मतलब। हाँ कर, नेक्स्ट कर, बोलता हूँ वो कर अभी। नेक्स्ट कर, पासवर्ड सेट कर। तो वो विंडोज 7 का बताओ ना। हाँ नेक्स्ट कर, नेक्स्ट कर, एग्जीक्यूट कर। हो गया ना सर? कर, फिनिश तो कर। नेक्स्ट कर, नेक्स्ट कर, फिनिश कर, नेक्स्ट कर। पासवर्ड दे इधर और वो चेक पे क्लिक कर। हाँ नेक्स्ट कर। हाँ इसको एग्जीक्यूट करके जो आगे आया उसको नेक्स्ट कर दे। मेरे को नहीं लगता कुछ आएगा, हो जाएगा। विंडोज 7 वाले एक जन स्क्रीन शेयर करो। सर हो गया, फिनिश कर देना है इसको। हाँ फिनिश के बाद में नेक्स्ट कर, नेक्स्ट। अभी का फिनिश आ रहा सर। हाँ कर, फिनिश कर। एग्जीक्यूट आ रहा होगा तो एग्जीक्यूट कर, नेक्स्ट आता है तो नेक्स्ट कर। हाँ सर हो गया, वो ओपन हो गई। हाँ हाँ हो गया तेरा इंस्टॉलेशन। सर स्क्रीन दिख रही है मेरी विंडोज। हाँ हाँ वो दोनों दोनों इंस्टॉल कर, 86 64। उसके पहले सबसे ऊपर वाला इंस्टॉल कर, एनडीपी। ठीक है। हेलो सर। एनडीपी। हाँ सर अजय रन एज बोलतोय। एडमिनिस्ट्रेटर कर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तीनों चीजें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर। हाँ बोल दूसरा। सर अजय बोलतोय. हाँ माझे ते स्लॅश क्विट केलं मी, त्यानंतर प्रोसिजर फिनिश होतं ना सर? हो, स्लॅश ट्वीट नाही का, डायरेक्ट क्लोज केलं तरी चालतं। चालेल चालेल. ये यहाँ पे क्या थँक्यू. लिखा है? थँक्यू सर. अरे वो एरर तो पढ़। सपोर्ट नहीं करेगा फिर, अगर वो एरर क्या है वो देख। एक्सेप्ट कर इसको नीचे। इंस्टॉल करो। हाँ इंस्टॉल करना ही है। 2015 है, उसमें कौन सा लग रहा है तेरे को? माइस्क्यूएल का पुराना वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा, 5 वाला। नहीं सर, नया लैपटॉप लेने वाला हूँ तो उसके बाद फिर मैं वही पे ही डाउनलोड कर देता हूँ। यहाँ इसी को फॉर्मेट कर देना लैपटॉप को, विंडोज को। नया लैपटॉप क्यों लेना है? नहीं, लेने ही वाला हूँ, ये बहुत पुराना लैपटॉप है। i3 प्रोसेसर हाँ है। सर मैं भी। कैंसिल कर इसको, मतलब आगे कर, कैंसिल नहीं, अधिक ये नहीं हो रहा है, इसमें इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है। इसको एक्सेप्ट करके ये कर एक बार। सपोर्ट नहीं करता है सिस्टम को, इसलिए हाँ वही सर, वो पुराना लैपटॉप है, बहुत पुराना। नहीं होगा ये। तो इसको पुराना वर्जन लेना पड़ेगा माइस्क्यूएल का, बस इतना कर सकते हैं। 5 वर्जन, अभी 8 चल रहा है तुमको 5 वर्जन पे, लेकिन कुछ कमांड से शायद नहीं चलती है ठीक से। नया लैपटॉप ले लो। ठीक है। हाँ सर मैं भी नया वाला ही लेने का सोच रहा हूँ। हाँ दूसरा कौन है? हाँ सर. हाँ सर मैं। नहीं नहीं नहीं, बाकी लोग। मैं- विंडोज 7 नहीं। ओके। सर क्या हम लीव कर सकते हैं? हेलो सर. हाँ 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 सर. तो ये विंडोज 7 वाले लीव कर सकते हैं। विंडोज 7 वाली लीव कर दो, और जिनका पहले हो गया वो थैंक यू लीव सो कर दो। मच। ठीक है सर, थैंक यू। सर पहले अनइंस्टॉल किया था, फिर से वो फाइल वगैरह डिलीट कर दी मैंने, अनइंस्टॉल कर दी, फिर अभी से. एक बार दिखा मुझे कंट्रोल पैनल में जाके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कर दे। सी ड्राइव में जा, सी ड्राइव में फोल्डर डिलीट हुए क्या चेक कर, प्रोग्राम फाइल्स में और प्रोग्राम डेटा में। प्रोग्राम डेटा में जा, बैक कर, बैक।
व्यू पे क्लिक कर और हिडन फाइल्स को ये कर, शो कर नीचे, हिडन फाइल्स इधर इधर, हाँ प्रोग्राम डेटा में जा, नहीं है चल रहा, इंस्टॉल कर वो अभी। संपला नहीं। तुम यस करू सर? हाँ यस कर। ये विंडोज 10 है ना रे? हाँ 10 हाँ है, 10 है। 10 है 10 है। हॅलो सर. हाँ सर माझं पण विंडोज 7 आहे. मग ते 10 मध्ये अपडेट केलं तर चालेल का? हो म्हणजे कर, चालेल ना, आपलं काम चालेल चालेल। चालेल ना सर? हाँ सर नेक्स्ट i3 प्रोसेसर वाला आहे सर. चालतंय चालतंय, काय नसतं, होतंय। 4 GB रॅम आहे ना? 4 GB आहे सर. हा, होऊन जाते। फक्त नंतर .NETच्या टायमाला थोडं स्लो होऊ शकतं। नेक्स्ट कर, ठीक आहे सर. एक्झिक्यूट कर अभी। हे या स्टेप्स सगळ्यांना माहिती आहेत ना, आता बघितले असतील ना? हाँ हाँ हा ऋषिकेश, तेवढं मग सगळ्या स्टेप्स सेम करून टाक। इथं काय येतं पॉपअप येईल एखादा, त्याला एक्सेप्ट कर, हा आणि इन्स्टॉल कर, आणि पुढे नॉर्मल फक्त सगळं सेम ठेव, फक्त पासवर्ड टाकायचं एवढं लक्षात ठेव। बरोबर, ठीक है सर। सर इसमें 2 ही ऑप्शन आ रहा है। हा, आणि जिथे पण एक्झिक्यूटचा ऑप्शन येईल ना ऋषिकेश, ते एक्झिक्यूट करूनच नेक्स्ट करायचं। ओके ओके। हा हॅलो सर. हा यस येस येस, हा एक्झिक्यूट। हा तुला म्हटलं ना, जिथे एक्झिक्यूट असेल तिथे एक्झिक्यूट करूनच नेक्स्ट करायचं, आणि फक्त तुला पासवर्ड साठी विंडो असेल तिथे एडिट करायचं, बाकी कुठल्याच विंडोला एडिट नाही करायचं। ठीक आहे। हा दुसरा, हॅलो हा सर. ते पहिलं इन्स्टॉल होतं माझ्याकडे, पण मग ते चालू आहे का नाही त्यावेळेस माय व्हिज्युअल कोडचं जे येतं ते येत नाहीये. स्क्रीन शेअर कर। MySQL काढला नाही ना पहिलं वाला तू? नाही. हा स्क्रीन शेअर कर पहिलं, डेस्कटॉप शेअर करा अख्खा। हा MySQL वर्कबेंच पाहिजे, टाक फक्त वर्कबेंच लिही, वर्कबेंच हे वर्कबेंच लिही, वर्कबेंच। हा खालच्या याला ये, ओपन कर। क्लिक करायचं, काय झालं रे, ओपन होत नाही का? हा काय बरं एक कमांड झालं झालं, क्लोज कर। खाली तर रूटला फक्त सिलेक्ट कर, कनेक्शन मध्ये MySQL कनेक्शन्स मध्ये खाली खाली, अरे इथं समोरच आहे तुझ्या डोळ्यासमोर, लोकल इन्स्टन्स MySQL, हा त्याला सिलेक्ट कर आणि पासवर्ड दे तिथे येत असेल तर। हा तुझा काय पासवर्ड होतो तो पासवर्ड टाक, आणि सेव्ह कर, सेव्ह। बरं ठीक आहे, नेक्स्ट टाइम सेव्ह करत जा। आहे चालू तुझं, हे स्कीमाज मध्ये जा, इथे तेव्हा ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या शेजारी टॅब आहे या साईडला, खाली खाली ऍडमिनिस्ट्रेशन दिसतंय, त्याच्या बरोबर खाली 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 तिथंच बरोबर आहे ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे, त्याच्या शेजारी स्कीमाज लिहिले, हा शिकली, हा आहे आहे ना? आहे चालू हो आहे। हा ठीक आहे. सर हा कनेक्शन टू सर्व्हर मध्ये प्रॉब्लेम येतोय। दाखव, स्क्रीन शेअर कर। हा मेसेज कनेक्ट टू सर्व्हर। हॅलो, युजर नेम दे, युजर नेम, रूट दे, रूट, पासवर्ड दे, तू काय टाकला होता तो। पासवर्ड म्हणजे आधी इन्स्टॉल असेल तर का? तर तू आता काही टाकलंच नाहीये का? नाही काय टाकला। आता पासवर्ड दे ना मग कुठला तरी।
चेकिंगचं क्रेडेन्शियलचं आहे, चुकलंय. इन्स्टॉलेशन चुकीचं झालंय तुझं. तुझं इन्स्टॉलेशन चुकीचं आहे. बॅक कॅन्सल कर. आहे कुठेतरी गडबड केली आहे. कॅन्सल कर आणि इन्स्टॉल कर परत सगळं. नेक्स्ट करून बघ इथे काय येते. नाही, कॅन्सल कर. चुकीचं केलं इन्स्टॉलेशन सगळं. परत अनइन्स्टॉल कर कंट्रोल पॅनलला जाऊन. म्हणजे माझ्या आधी व्हिज्युअल जे रिडिस्ट्रीब्युटरचे फाईल आहेत कंट्रोल पॅनल मध्ये. तू फक्त मायस्क्यूएलचं जे काय आहे ना आता सध्या, हा कुठे मायस्क्यूएलचं आहे का काय याच्यात? खाली घे जरा. नाही, एक काम कर, हे पेजला आहे ना क्लोज करून परत ओपन कर. रिफ्रेश कर, नाही तर वरती सरळ सरळ इथे हे बघ, इथे ह्याच पेजला इथे वरती रिफ्रेश आहे बघ. हा हा हा, त्याच्यात मायस्क्यूएलचं बघू खाली. हे सगळे कनेक्टर, हे सगळे मायस्क्यूएल इन्स्टॉलर वगैरे सगळे अनइन्स्टॉल कर. आणि प्रोग्राम फाईल्स मधलं फोल्डर आणि प्रोग्राम डेटा मध्ये फोल्डर जर असेल तर डिलीट करायचं ते. हा हा त्याच्यानंतर रन करून मला दाखव. हा हा नेक्स्ट. तर ते अनइन्स्टॉल केले मी. हो, स्क्रीन शेअर कर लगेच. हे केलं ते. हा, आता जा तिकडे. एक काम कर, ते दोन्ही इन्स्टॉल करून बघ. ते 2015 आहे का 2017 आहे बघ जरा एकदा रन करून. 2015 नंतर 2015 आहे का? हो. तुला 2019 पाहिजे? एक मिनिट थांब जरा, मला चेक करू दे. तोपर्यंत दुसऱ्याने स्क्रीन शेअर करा कोणीतरी. सर, हाँ ये 2 ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट करूँगा. नेक्स्ट कर. येस करून एक्झिक्यूट वर क्लिक कर. आणि इथून पुढे जिथे पण एक्झिक्यूट असेल तिथे एक्झिक्यूट करायचं आणि मग नेक्स्ट करायचं. आणि फक्त पासवर्ड सेट करायला फक्त तेवढं यूज करायचं. हा, नेक्स्ट. तिथे मी घेतो, तिथे तू घे. तरी पण किसी का बाकी है क्या? श्रीकांत, ओमकार. ओमकार तुझं नाही, पवन, प्रियंका, तेजश्री. हे बाकीचे कोण आहेत? ग्रुप थांबले कशाला आहेत तुम्ही? लिव्ह का नाही केली मीटिंग? सर, झालंय का तुमचं? नाही सर, अनइन्स्टॉल करायला त्या आधीच्या फाईल्स. हाँ, आणि श्रीकांत. सर एक बार चेक करेंगे क्या? हाँ बोलो बोलो, जल्दी स्क्रीन शेयर करो ना फिर. काही सगळे डाउनलोड करतोय. हेलो. हाँ सर एक बार चेक करेंगे क्या वो सही से किया हूँ कि नहीं? स्क्रीन शेयर करेगा तब करूंगा ना. सर किया था अभी. हाँ तो कर कर कर, और मुझे आवाज दे एक बार. मेरा ये था. सर कर दिया. बराबर है, चल रहा है. क्लोज कर. क्लोज कर दो. हाँ, थैंक यू सर. सर ये एक सी फाइल ना शेयर है. ओमकार,
हा सर. मी लिंक टाकली बघ चॅट मध्ये, त्या लिंक वर जा आणि स्क्रीन शेअर कर. त्या लिंक वर गेला का? नाही नाही सर. जा. हे वालं हे 15 आहेत, हे 15च्या कडे डाउनलोड होत आहेत. 2019 नाही वाटत त्याच्यात. 17 आहे सर. दाखवतोय ना 15 पासून ऑनवर्ड आहेत ना. 13, 12, 15च आहे ना ही. 15, 17, 18, हे काम करतात त्याच्या ज्या खाली ज्या फाईल आहेत ना सगळ्या, या सगळ्या वेगवेगळ्या टॅब वरती क्लिक करून डाउनलोड कर. ऑटोमॅटिक डाउनलोड होईल तसं ते. ते राहू दे, बाकीचं नको क्लोज करत बसू. येस कर, सेव्ह कर. सेम दुसरी पण कर. 2019 and 22 the test table latestly support English US Microsoft packages. झालं का डाउनलोड? डाउनलोड्स मध्ये जा आणि रिफ्रेश कर एकदा. आता कुठली फाईल होती ती कसं कळेल तुला? डाउनलोड झालेली समजेल तुला बघ टाइमच्या हिशोबाने. हे बघ, ही ARM पहिली इन्स्टॉल कर. ते बरोबर होतं, ते नको काय करत बसू. नेमनीच असू दे. हा इथे इथे 3rd नंबरची फाईल. हा 15 ते 22 आहे सर. नाही नाही, 3rd नंबरची फाईल इन्स्टॉल कर इथे. हा ही इन्स्टॉल कर. रन ॲज ऍडमिनिस्ट्रेटर करत जा रे. ठीक आहे, कर इन्स्टॉल. चल 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 चल. नाही, 1 or more issues can लॉक फाईल क्लिक कर इथं, लॉक फाईलला. थांब थांब, मोठं कर ना त्याला. C++ value which 14. तर दुसऱ्या दोन्ही फाईल करून बघ एकदा, त्याला पण यायला पाहिजे प्रॉब्लेम. हे बंद करू. नाही, क्लोज कर. सर चेक रिक्वायरमेंट्स मध्ये नेक्स्ट करायचं का एक्झिक्यूट करायचं? जिथे एक्झिक्यूट असेल तिथे एक्झिक्यूटच करायचं आणि मग नेक्स्ट करायचं. या 2 जरी झाल्या ना, हा ठीक आहे. दुसऱ्या तर 2 कर. त्याची गरज नाही, मग RM चे राहू दे. त्याचं .NET असेलच ना फ्रेमवर्क. हा नेक्स्ट इन्स्टॉल. आता ते मायक्रोसॉफ्ट रन करून बघ. होम व्हर्जनला प्रॉब्लेम येतो कधी कधी, अपडेट नसले. डायरेक्ट कर रन MySQL. आता तिकडे पहिलं MySQL ते नको राहू देते तसंच. मी रनाचा ऍडमिनिस्ट्रेटर केल्यामुळे झाला. दुसरं ट्राय करून बघू का? नाही नाही, बघू ना याच्यात काय एरर येतोय अजून. अँटीव्हायरस डिसेबल केला का? ठीक आहे, राहू दे. बाकीच्यांचे तोपर्यंत काय. हे दुसरं कोण स्क्रीन शेअर करा तात्पुरतं. नेक्स्ट. तेजश्री, पवन. काय प्रॉब्लेम आहे पवन? काय झालंय? आवाज येत नाहीये तुझा. हॅलो पवन. अरे पवन, माईक चालू कर. हो, आवाज येतोय सर आता? हा आता येतोय. हा सर, ते थोडस नेट स्पीड स्लो आहे सर. हे माय इन्स्टॉलर केलं होतं रे मी डाउनलोड, बट ते एकदा ते तसंच राहिलेलं आहे. ते कॅन्सल केलं होतं मी स्टार्टिंगला, ते बंदच नाही झालं अजून. अरे मशीन स्लो झाले, रिस्टार्ट करून टाक मशीन.
आणि उद्या बघू आपण. एकदा शट डाऊन करून एकदा परत उद्या बघू मग आपण. तू एकदा स्टेप्स तुला कळाले असतील बऱ्यापैकी. मी बघितलेले आहेत, बऱ्याच स्टेप बघितलेले हा हा, तर जिथे पण एक्झिक्यूटचा असेल तिथे एक्झिक्यूट करून नेक्स्ट करायचं. बरं चालेल. यस नो विचारेल तिथे येसच करायचं. ओके ओके आणि पासवर्ड असेल तिथं पासवर्ड टाकून मग फर्दर प्रोसीड करायचं. चालेल सर. फिनिश केलं की 1-2 वेळा फिनिश केलं की परत नेक्स्ट ऑप्शन येतो. हा, त्याला नेक्स्ट चालेल. करून मग पुढे जाशील. हो सर चालेल. हा चालेल. तस मी डाउनलोड केलेले आहेत सगळे. हा ठीक आहे चालेल. तर आता इथं दोन सगळं नाही, फक्त MySQL चालू रन करशील पहिलं तू नुसतं. ते बाकीचे बरं. उगाच नको हे करू. सर आय हॅव शेअर माय स्क्रीन. हा नेक्स्ट कर तेजश्री पटकन. इथं 3rd नंबरचा रेडिओ बटन ऑन करायचं का? नाही काही नाही, तू फक्त नेक्स्ट कर. काहीच नाही करायचं. येस कर. इथून पुढे जिथं पण एक्झिक्यूट असेल एक्झिक्यूट कर. आणि येस नो करायचं तिथं येस कर. ठीक आहे. ओमकार झालं का रे? हो सर, 2च आता हे आले तिथे. बघू. हा कर बरं एक नेक्स्ट. पुढं काय येते ते बघू मला. येस कर. आता एक्झिक्यूट कर. झालं बघ ते. हो सर. हे नंतर तुला माहिती काय करायचंय. हो सर आहे. जिथे पण एक्झिक्यूट आहे तिथे एक्झिक्यूट, जिथे नेक्स्ट असेल तिथे नेक्स्ट, जिथे येस नो करायचं तिथे येस. हो सर. हा, आणि शेवट जेव्हा ती स्क्रीन येईल काळी कलरची तेव्हा तुझं झालंय असं समज. हो सर. पासवर्डच्या टायमाला फक्त पासवर्ड टाकून लक्षात ठेवा. हो हा, बाकी कुठंच काय चेंजेस करू नको. नाही एक्झिक्यूट नेक्स्ट बस. आणि पोर्ट नंबर 3306 त्याला चेंज नाही करायचं. हा. हॅलो सर. हा सर, याच्यात क्विट केलं सर आणि ते स्क्रीन अपिअर नाही होत. तू दाखव ना मला, स्क्रीन शेअर कर. तेजश्री मीटिंग सोडू शकते. हा येस सर. हा, ओमकार तू पण. काय नाही, क्लोज कर डायरेक्ट इथून. हे क्लोज कर इथं. एक्झिट क्विट करायला सांगलं. डायरेक्ट नाही कर डायरेक्ट क्लोज करते मागचं. हा, आता झालंय तुझं इन्स्टॉल. काय प्रॉब्लेम. MySQL वर्क बेंच टाईप करून बघ तिथे खाली सर्च बॉक्स मध्ये. एंटर कर. आणि तिथं कनेक्शन असेल ना खाली, त्याच्यात एका त्या कनेक्शनला पासवर्ड टाक. होईल ओपन व्हायला वेळ लागतो त्याला. पेशन्स ठेवा थोडे. खाली इन्स्टन्सला. हा, तिथं पासवर्ड दे फक्त. आणि तो सेव्ह कर खाली चेकबॉक्सला. आणि ओके कर. हा, झालंय कनेक्शन बघ. ठीक आहे, कर बंद आता. ओके सर, थँक्यू. आणि 2च्या मीटिंगला जॉईन करा. ओके.